नमस्कार, हेल्थ फॉर ऑल के 22वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दर्द यानी पेन एक ऐसा शब्द है जो बीमारी कम और किसी बीमारी का लक्षण ज्यादा प्रतीत होता है। हर व्यक्ति, चाहे आदमी हो या औरत, बिना किसी बीमारी के भी दर्द महसूस करता है या करती है, और ये दर्द शरीर के किसी भाग में हो सकता है। आमतौर पर लोग दर्द के कारण तलाशने के बजाय कोई पेन किलर खाकर तत्काल राहत पाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये काम कर जाता है, लेकिन लोग ये नहीं जान पाते कि आखिर दर्द क्यों हो रहा है। चाहे आदमी हो या औरत, दर्द अगर बार बार हो तो स्थिति और शोचनीय हो जाती है। ऐसे में पेन किलर कई बार दर्द कम करने के बजाय बीमारी को बढ़ा देती है। घर घर में मौजूद इसी समस्या को आज हमने हेल्थ फॉर ऑल में विचार का विषय बनाया है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दर्द की दवा क्या है, क्यों होता है ये दर्द, और कैसे हो इसके उपचार, और क्या है पेन मैनेजमेंट। हमारा ये शो अगले 3 घंटे तक यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव रहेगा। तो शो की शुरुआत में हम हमेशा की तरह पेश कर रहे हैं राउंड अप वीडियो। नमस्कार, हेल्थ फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड महिलाओं को समर्पित है। पूरी दुनिया 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे के रूप में मना रही है, तो हमने भी तय किया कि आज के इस एपिसोड को एक्सक्लूसिवली महिलाओं के नाम कर दिया जाए। महिलाओं की सेहत पर पूरे परिवार की सेहत टिकी होती है, लेकिन महिला खुद से पहले अपने बच्चों, अपने पति और पूरे परिवार के बारे में सोचती है। कोरोना काल में महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ गई। खासकर वर्किंग वुमेन को घर और दफ्तर में संतुलन बनाने की मशक्कत करनी पड़ी। तो आज हम महिलाओं से जुड़ी तमाम समस्याओं पर महिलाओं के ही विचार जानेंगे, अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं से। We move on to this first session. महिलाएं मेंटल स्ट्रेस में बहुत रहती हैं जी, और वो खुद के लिए नहीं, परिवार के लिए। हाँ जी। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए उन्हें क्या करना है? किसी थेरेपी की जरूरत है या उसके खान पान में सुधार से हो सकता है? उसको कैसे वो दूर करें? महिलाओं के पास इतना स्ट्रेस क्यों होता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि महिलाओं के पास स्ट्रेस का रीज़न है। अगर हम शुरू से कोशिश करें तो देखेंगे कि एक जो अपब्रिंगिंग होती है महिलाओं की, ये बहुत ही एक हमारा जो टॉपिक है कि ब्रेकिंग द बैस, ये जो हमारी महिलाओं की अपब्रिंगिंग होती है, शुरू से उन्हें सिखा के रखा जाता है कि अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है। अगर कुछ गलती देख भी रहे हो तो घर में शांति बनी रहे, परिवार में शांति बनी रहे, आप अपने आप को थोड़ा सा दबा करके रखो। ये लॉन्ग पीरियड
पीरियड ऑफ टाइम में महिलाएं बहुत सारी चीजों को, जैसे वो बड़ी होती हैं, मैच्योर होती हैं, बचपन से जो उन्हें सिखलाई मिली रहती है, जब वो बड़ी होती हैं और वो समझती हैं कि अगर वो इस तरह से बात करेंगी, अगर जवाब क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगी तो घर की शांति खराब हो जाएगी और वो अपने सारे स्ट्रेस को, तनाव को, जो उनके इमोशनल स्ट्रेस है, जो वो चाहती हैं अपने मन के अंदर दबा कर रखती हैं और ये धीरे धीरे एक एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप में होना शुरू हो जाता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी थेरेपी की नहीं जरूरत है, सभी उनके परिवार वालों से भी रिक्वेस्ट है कि उन्हें सपोर्ट करें। बच्चियों को यह न सिखाए कि घर की शांति के लिए चुप रहें, जो वो बोलना चाहते, जो उनके दिल में है, एक्सप्रेस करे, फ्रीली खुल करके बोले कि वो क्या चाहती हैं, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या नहीं पसंद है। जब ये छोटी छोटी प्रैक्टिस वो अपनी लाइफ में लाएंगी तो इस तरह का स्ट्रेस ऑलरेडी कम हो जाएगा। NLP experts say that there is a connection between neurological processes, linguistic skills, and behavioral patterns learned through experience, that is programming, and that these can be changed to achieve specific goals in life. Now, how did NLP help kids who had all these issues during the COVID lockdown? So basically what happens is that with kids, we always say in NLP, there's never a never a not bright child. There can be a not so bright teacher. So why do we say that? We say that because every child is unique and every child has a different way of learning. So some kids are more learning, they learn better when they see visuals. Some kids, they learn better when they can touch and feel something. And some have great auditory skills and therefore they listen and they learn. So that's why we as adults, as teachers, have to really look into the modality, what the child really needs for his learning, for him to really be to the optimum level of his potential. So once that is figured out, most of the part is sorted. And once that is sorted, then we know exactly how to reach the subconscious of the child. IVF रूरल इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है जितना कि अर्बन में है और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि लोगों में ये भ्रम है या लोग ये मानते हैं कि जो IVF बेबीज हैं वो नॉर्मल नहीं होते और उनमें कुछ न कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होता है। ये मिथ है या सच्चाई? पीपल आर लेस अवेयर ऑल्सो, उनको वहाँ पे उतना पता नहीं है। अगर कई बार अभी भी हमने देखा कि अगर सपोज मैं आपको एक इंसिडेंस बताऊंगी। कुछ साल पहले मैं जब प्रैक्टिस कर रही थी एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, एक कपल आए और मैंने उनको गांव से ही आए थे मेरे पास और मैंने उनको बताया कि आपको IVF में इनकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है और ट्यूब्स ब्लॉक की वजह से इनका नॉर्मल कंसीविंग नहीं हो सकता है। फीमेल की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आपको IVF पे जाना चाहिए। जब मैंने उन्हें खर्चा बताया, एक्सपेंडिचर बताया, तो हस्बैंड वाज लाइक मैं दोबारा ही शादी कर लूंगा, इससे अच्छा तो इसको छोड़ करके दूसरा, मुझे डिवोर्स में भी उससे ज्यादा पैसा, मुझे डाउरी में भी उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। सो दिस इज स्टिल प्रोमिनेंट, दे जस्ट लीव द वाइफ एंड रीमैरी और समथिंग। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज द स्टेट करंटली इवन इन मेनी रूरल एरियाज। बट येस, अवेयरनेस बढ़ रही है, अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है और लोग हमारे पास रूरल एरिया से अब आते हैं ट्रीटमेंट के लिए भी। लेकिन उनके फैक्टर्स यूजुअली जैसे टीबी हो गया, ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, ये वाले फैक्टर्स ज्यादा होते हैं। सो अब वी आर इन द 5th डिकेड ऑफ IVF एंड हमने जिन लोगों का IVF हुआ था उन बच्चों का भी अब नॉर्मल कंसीविंग, उनके अपने खुद के बच्चे हो चुके हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि IVF में या ICSI में कोई बर्थ डिफेक्ट का इंसिडेंस ज्यादा होता है, बट मैं ये कहूंगी कि ये जो है स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा चेकअप में रहते हैं, फॉलोअप में रहते हैं। राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम उसको चेक करते रहते हैं, तो उनका इंसिडेंस ऑफ डायग्नोजिंग थिंग्स इज मच हायर। हम उसको पकड़ पाते हैं जल्दी स्थिति में। बट कोई डाटा, कोई लिटरेचर ये सजेस्ट नहीं करता कि इनमें कोई इंसिडेंस में डिफरेंस होता है। नॉर्मल कंसेप्शन, IVF conception, the chances of congenital malformation is similar. This year's International Women's Day theme is Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Statistics show that 70% of the 1.3 billion people living in conditions of poverty are women. In urban areas, 40% of the women poorest households are headed by women. In such a scenario, how can we assure healthy
eating nutritious food to these people? Do we have a diet plan for this particular section of the society? Yeah. So, as I have mentioned earlier also, that for getting a good, nutritious, balanced diet, you don't need too much of money. Only the choice of food matters. Like I have mentioned that the 3-time meal is very important for either a poor section or well-to-do section. Like morning breakfast, lunch and dinner is must for everybody. In morning breakfast for poor section, whatsoever whole grain cereals, or we can say ragi, bajra, makka, jaw, anything that is available to their house, they can make chapati or roti from that, and seasonal vegetable. That will suffice their need, because ragi is a very good source of calcium. Like munga or sahajan ki sabji and leaves are very good source of iron and other vitamins and minerals. So they can use these seasonal and local food, vegetable and normal cereals like ragi, bajra, makka, anything for their breakfast. And in lunch also, for other sources, like they can utilize whatsoever local food is available, vegetable or the fruit, and they can like develop, एक बोलते हैं local farming, farm fisheries, अपना hen कर सकते हैं, rear develop कर सकते हैं, and they can use eggs, chicken from their own farm, local vegetables and whole meal rice. It's not necessary to have wheat only. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसको बोलते हैं. क्या ये एकमात्र यही वजह है जिसके कारण ये स्टिग्मा बना हुआ, सोशल स्टिग्मा, या और भी कारणों से ये फैलता है, ये बीमारी फैलती है? क्योंकि अभी तक यही कहा जाता है कि सिर्फ यही एक वजह है फैलने की. देखिए, HIV प्रेडोमिनेंटली 3 कारणों से होता है. पहला कारण तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दूसरा ये मदर टू चाइल्ड, अगर इन्फेक्टेड मदर है तो बच्चों में हो, और अगर उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है प्रेगनेंसी के दौरान तो फिर ये बच्चे में भी हो सकता है. और तीसरा है कि कंटामिनेटेड नीडल्स, मतलब अगर आपने IV ड्रग अब्यूजेस जो होते हैं तो वो अगर नीडल शेयर करें तो फिर ये HIV इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है. बट हमारी कंट्री में IV ड्रग अब्यूज इतना कॉमन नहीं है, ये एक कॉमन मोडालिटी ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है. सो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर ईदर बिकॉज ऑफ either sexually transmitted or because of the contaminated blood transfusion. अगर blood transfusion किसी को जैसे हॉस्पिटल में कोई इंजरी हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ या फिर एडमिशंस हुए, तो अगर नीडल्स एप्रोप्रिएट नहीं है तो फिर उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है. यही मेजॉरिटी ऑफ द कॉजेस है. We move on to the second session. You are connected with rural tourism. How did COVID lockdown and the pandemic affect this sector, and who got affected the most? The Rural Tourism Council of WICI, Women's Indian Chamber of Commerce and Industry, that I founded was started in July 2021. So it was, we were well into the pandemic by then. I would say the most affected sector were rural women, obviously, because even the UN, the latest UN guidelines say that, we have to empower rural women to get the tourism industry back on its feet. So yes, rural women, and also one of the triggers for me to start the foundation was the migrant crisis during the first lockdown. We saw how people in the cities who had come from different rural areas, how badly they were affected. So that got me thinking that there should be a choice for people to stay in their villages, in their, in the communities they were raised in, and there should be a choice for them to earn well with dignity while staying in their own homes. So that is why the Rural Tourism Council was started. The sections that were most affected were rural women, of course, the youth, and mostly people who had no choice but to come to cities to earn their livelihood. कुछ महिलाओं ने इंस्पायर्ड होकर ये सोचना शुरू कर दिया, जो होम मेकर्स हैं,
कि अरे वर्क फ्रॉम होम अगर है तो मैं भी कर सकती हूँ, घर के काम के अलावा भी मैं कर सकती हूँ, भले ही पार्ट टाइम करूँ मैं भी कर सकती हूँ। आपने ऐसा महसूस किया क्या? आजकल जो सिनेरियो है वो काफी चेंज हो गया है। जो ट्रेडिशनल जॉब रोल्स होते थे जिसमें आपको ऑफिस जाके या वहां पे जाके ही काम होता था या अपनी कंपनी में जाके या इंडस्ट्री में जाके, वो आजकल का सारा जमाना ऑनलाइन हो गया है। तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं बिकॉज आजकल देखिए ना, सारा ट्रेंड, चाहे आपका लर्निंग का हो, चाहे आपका एजुकेशन का हो, चाहे आपका मार्केटिंग का हो, चाहे आपका एंटरप्रेन्योरशिप का हो, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल एरा में है। तो उनके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है जो कि पहले नहीं थी, कि वो इन्फ्लुएंसर बन जाए, वो कुछ क्रिएटिव कंटेंट लिखें, वो किसी बारे में अपना रुझान लिखे, कुछ भी करें ऑनलाइन। तो अब अपॉर्चुनिटीज है। इवन सारा का सारा अपना बिजनेस ऑनलाइन चला सकते हैं आज की डेट में। इतने सारे मार्केट प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो चीजें बिल्कुल शिफ्ट हो गई हैं। तो अपॉर्चुनिटीज हाउसिंग, वर्क वाइफ्स के लिए जो इतनी ज्यादा आई हैं, जो कि पहले नहीं थी। तो मेरे ख्याल से हम आने वाले समय में यह परिवर्तन और ज्यादा देखेंगे। Shoshi Clothing, I hope my pronunciation is right, works with about 30 to 40 weavers from rural India, mainly Bengal, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Karnataka, states that were badly hit during the pandemic. How did you sustain weavers from rural India? See, one of the things was we continued to give them work. So it wasn't like because there was the pandemic, we didn't cancel any orders, number one. And number two was we continued to give them newer designs and did a lot of continue to do our R&D at that time, because it was a good time, because my team and all of us were operating mostly online, but we were able to give them designs. And the other thing is, in the business of clothing, what you can do is you can keep fabric and eventually use it in the later part of, it's not a perishable good, thankfully. So we kept we are using a lot of those fabrics now, in the coming collections and summer, all of that. Art is an outlet to combat depression, loneliness, anger, frustrations that were intrinsic part of the pandemic. What's your take on this? We also got a lot of time to deliberate upon new designs. We went for a hiring for an NIFT designer, especially to design a new series for us. We launched a few new series, and then we went on to teaching the girls from a distance through WhatsApp tutorials. I would create a sample plate with a video recording, and the same will be published on a WhatsApp group with the artists. So so we got a lot of time to deliberate, and the engagement was really very kept us alive. And we could tide over the difficult times because of the creative part. You're very correct. Every day we have something to look up to. Every morning, yes, a new design is coming up. Yes, ma'am is going to send a tutorial to us. So all these things really helped us. Optimist Corporate Solutions' aspiration is to empower the multitude of unemployed youth with the requisite skills and build a bridge to job opportunities leading to sustainable employment. With many losing jobs due to pandemic and a huge workforce coming from the Gulf region and other areas, how challenging was it for you to find jobs for these youngsters? Past 2 years have been extremely challenging because our model is we are running our centers all over the country, presently in more than 7 states, in which we provide residential training programs. And they are like industrial tailoring, it can be retailing, security, BPOs, and various others, where we provide the employment opportunities with different industries. But what has happened, this COVID has hit us, and most of our centers have been closed down because of, obviously, like we have all the institutions, colleges, schools, everything has closed down, and so our centers also. And that has definitely hit their employment because we were not able to give them the required training. Then there was no certification, and they were not getting enough industry interface. So now we are trying to come out of this big gap.
and we have started this app where they can also log in, and from their mobiles they can get the opportunity to get trained, and they can be interviewed, they can be logging in for the employment also. We now move on to the third session. What happened to PR during the COVID lockdown and during when companies were actually going through a terrible phase? And where are you placed now that the companies are slowly taking off? So you can you can divide the question in two ways. I just want to clarify, PR Movement covers the PR sector as a journalist. I'm not a PR practitioner myself. So through my observations, I'm sharing what happened. Yes, the pandemic was very tough for the PR firms, but what was very interesting is that whether they were small, medium, or large-size firms, they put in all measures that they could to retain their staff and support their staff. They did suffer from reduction of clients, etc. But very few of them actually, I've not heard of a single PR firm which actually shut down. So they in fact did very well. Yes, they had to cut some pay, but from what I know now, all the pay has been fully restored. And actually, it's a boom time for PR. Because what the pandemic really showed people was that the way you manage your reputation and outward communication matters even more. And more interestingly, how you communicate with your employees became very important. Otherwise, internal communication is like the stepsister of reputation management. But it became extremely important, and I would say it's a boom time for PR firms now. Some of them have told me that they have earned more in this last quarter of last year than they have in the whole year. एक महिला होने के नाते आपको पेंडेमिक के दौरान क्या दिक्कत हुई पत्रकारिता में? लॉकडाउन जब लगा था उस वक्त तो कुछ संस्थान थे जो बुला रहे थे अपने एम्प्लॉइज को ऑफिसेज में, और कुछ ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया था। तो जब वर्क फ्रॉम होम वाली स्थितियां आई हैं, उस वक्त में ये था कि उनके ऊपर जो काम का प्रेशर है वो डबल हो गया था। वो ऑफिस का काम भी कर रही हैं, वो घर का काम भी कर रही हैं, और घर में अगर कोई कोविड पेशेंट है या हो गया है तो उसकी देखभाल के लिए उनको खुद को कैसे अपना मेंटल स्टेटस बनाना पड़ रहा है, क्योंकि खबरें भी ऐसे ही उनके पास आ रही हैं कि आज इतने केसेस आ गए हैं, ये सिम्टम दिख रहे हैं तो कोविड हो सकता है। जो बिल्कुल जो शुरुआती टाइम था कोविड का, उस वक्त में इतनी सारी कंफ्यूजन थी लोगों के बीच में, और महिलाएं तो सबसे ज्यादा सफर कर ही रही थी, क्योंकि उनको घर ऑफिस दोनों चीजें उस वक्त वर्क फ्रॉम होम में और ज्यादा संभालनी पड़ रही थी। और फिर एक वो बैकबोन जो हमेशा हम मानकर चलते हैं कि वो संभाल लेंगी चीजों को, तो वो उनके ऊपर और एक बढ़ गई थी जिम्मेदारी कि मुझे नहीं टूटना है या मुझे नहीं हार माननी है। How far has infodemic affected children? Because quite often the message used to go from parents, look, this is what I read on internet or on WhatsApp. So how did children actually get on with infodemic? I feel that parents, should have had the talk, per se with the young ones, and even the teachers in Zoom classes, etc. Talking to children about how, what is right, what is the correct information that should be given out to them. Because I find that a number of them were quite worried. There was a lot of anxiety because of, pictures, television coverage. I think the scariest part was last year, during the second wave when all the bodies were shown. And I found that they were so traumatized. They were, kids were scared. They were asking, you are being shown live visual images of bodies burning. In our culture or in India, cremating the bodies is a very natural thing. It is something that happens to everybody. And to see all of that and to see bodies being piled up, I thought, probably it's the media's way to tell people as to what is going on in our country at that moment. But somewhere I think there should have been either, what do? Do you switch your television sets off? I think it left a big, impression. And I thought some of them were very, very horrified by it all. लंबे गैप के बाद जो बच्चे आए हैं उनके बिहेवियर में आप कोई फर्क देखती हैं क्या? देखिए, कुछ बच्चे हैं, एक दो बच्चे मैं बोलूंगी जिनमें कि जो बिल्कुल थोड़े से चुप हैं,
तो उनको उनसे बात करना टीचर्स को थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, बिकॉज उनको शायद समझ ही नहीं आ रहा, और कुछ चीज़ों में ना उनसे एक कॉन्वर्सेशन इज बिकमिंग अ डिफिकल्ट। अभी रिसेंटली मेरे को अभी 2-3 दिन पहले ही वन ऑफ द टीचर शी शेयर्ड विद मी कि मैम ये बच्चा स्कूल आया है बट द चाइल्ड इज नॉट स्पीकिंग एट ऑल। उससे टीचर पूछ रही है नाम बताइए बेटा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, कुछ भी पूछे, वो बच्चा बहुत कम बोल रहा है। तो समवेयर देयर इज समथिंग वेयर वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर्स ऑल्सो, कि बच्चा किस दौर से गुजरा है, व्हाई द चाइल्ड, बिकॉज देयर आर सम चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ऑल्सो। कईयों ने एक पेरेंट या किसी ने दोनों पेरेंट्स को खोया है, तो आई एम श्योर दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग देम। तो ये हमें चेंजेस थोड़े से नजर आ रहे हैं, बट यस कुछ सीनियर बच्चे हैं जो बहुत खुश हैं, आई वुड से दे आर हैप्पी कमिंग बैक टू द स्कूल, मीटिंग देयर फ्रेंड्स। और हमने अपने अनुभव से देखा कि एक कांस्टेबल से लेकर टॉप ऑफिशियल तक जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, और पेंडेमिक के दौरान तो फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह उन्होंने काम किया। किस तरह की चुनौती रही, आप अपने अनुभव से बताएं। पेंडेमिक की बात करें तो नेचुरली ये एक ऐसा फिनोमिना था जो सभी के लिए बहुत नया था, लेकिन जब पुलिस को और हमारे मेडिकल प्रोफेशंस को फ्रंट लाइन पर रहना था तो एक अननोन बीस्ट की तरह था। हमें किसी को पता नहीं था कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे, इसके क्या इलाज होगा, इससे क्या क्या हो सकता है, तो एक भय था। लेकिन मैं ये महसूस करती हूँ कि उस समय दिल्ली पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया। मेरी अपनी टीम ही, मैं स्पेशल ब्रांच में थी, तो मेरी अपनी टीम ही, हम उनको सभी प्रिकॉशंस के साथ भेजते थे फील्ड में। लेकिन उस समय जब एक पलायन शुरू हुआ हमारे माइग्रेंट वर्कर्स का, उस समय उनके बीच में खड़े होके उनसे बातचीत करना, मेकिंग श्योर कि जहां पर खाना नहीं पहुंच रहा है वहां खाना पहुंचना, फिर हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन है, मोर्चरीज में क्या सिचुएशन है, क्रेमेटोरियम्स में क्या सिचुएशन है, तो इन सब के ऊपर कवर कर ही रहे थे। इसके साथ साथ आई बिलीव कि पुलिस ने बहुत मतलब जो उनकी एक रेगुलर ड्यूटीज होती है उसके ऊपर उठ के काउंसलिंग करना लोगों की, उनमें एक जागरूकता लाना इस पेंडेमिक के बारे में और क्या क्या प्रिकॉशंस किस लिए जरूरी हैं, वो एक रीच आउट करना एक बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज था। जो ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई इस पेंडेमिक के दौरान, तो बड़े शहर तो झेल गए, छोटे शहर के बच्चों को बहुत दिक्कत हुई, मीडियम और छोटे शहर के बच्चों को। आप अपने अनुभव से ये बता सकती हैं कि क्या तकलीफें हुई ऑनलाइन, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास, पेरेंट्स के पास ये सुविधाएं नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है। तो क्या किस तरह की दिक्कतों का सामना करना, क्या वो बच्चे जो जिनके पास ये सुविधाएं नहीं वो वंचित हो गए पढ़ाई से? Yes, as compared to दूसरे शहर, Ahmednagar, though it is a very large district of Maharashtra, but no doubt it is a very small town as compared to the other metro cities. And जो मेरा school है, that is located in the rural part of the Zila Parishad. It says that we are located in the rural part of Ahmednagar, where मेरे parents they are from the sugar factories of Rahuri. And there are a lot of farmers also, sugarcane farmers. And yes, from the town of Nagar also. So about 70 to 80% parents, no doubt, they had the gadgets. They were accessing to online. But yes, 10 to 15% parents, वो जब इतने हिट हुए इस पैंडेमिक से, वो नगर शहर छोड़ के they went into their villages for survival. अब we saw that उनके जो बच्चे हैं, they are not attending the classes, जैसे आपने बोला, 3-4 of them or maybe 1 from each class. तो हमने personal calls करे उनके parents को, and उन्होंने हमें बताया कि because survival नगर में मुश्किल था, हम गांव में आ गए हैं to survive with our other relatives. So what we started doing is that we at least started doing recorded videos of our sessions. Our teachers were taking live sessions and हम उनको भेज रहे थे ताकि वो अपने सहूलियत पर whenever they could get connectivity, जब भी वो recharge करा पाए, they could have accessibility. And we told them that the school, as far as the principal and some teachers is concerned, is open. आप बच्चे को लाइए, जब भी लाना है,
notebook correction. ऐसे करके हमने उन बच्चों के साथ we had to tackle with them. Hello, namaskar, and good morning. I'm Shankar Raj, the president of Heal Foundation, and I'm glad to have you all on this particular platform. Before we move on to the first session, let me remind our viewers that we are live on Facebook and on YouTube. We have the first session on pain management with physiotherapy. And we have with us Dr. Navanita Purkayastha, who has over 22 years of experience as a physical therapist and is currently the area manager and director of rehabilitations of Hudson Point at Riverdale and Citadel at Kingsbridge. She's also a certified member of the Indian Association of Physiotherapy and a member of the American Association of Physical Therapy. Before we move on, are you in India or you are abroad? Because you're... Good morning. Actually, I'm in India right now. Oh, okay. Because your CV mentions that you are in Hudson and other areas, so I was wondering whether you're in India. Okay, over to you, Dr. Navanita. You have time till about 9:10, and probably answer a few questions after that. The platform is entirely yours now. Thank you so much. Actually, I want to thank everybody for the opportunity. This was one of my friends who asked me, so I really gladly take this opportunity to explain about pain and role of physiotherapy. So our topic today is chronic pain. अगर मुझे chronic pain के बारे में बताना होगा, chronic pain मतलब वो pain जो हमेशा आपके साथ रहती है. Chronic pain by definition is a pain which lasts more than 6 months. Pain is an unpleasant sensation to the body, right? Which is caused by any
injury, tissue injury, or any kind of and cut, burns. So it can be divided into acute pain, chronic pain, nociceptive pain. There's various kinds of pains. Acute pain is something, injury hui, dard hua, heal ho gaya injury, pain is done, it's gone, it's less than 6 months. Chronic pain is something which lasts with you forever. जैसे कुछ लोग हैं हमेशा बोलते हैं सुबह उठ के, अरे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, अरे मेरे कमर में दर्द हो रहा है, या गले में कुछ है, सर दर्द है. That is chronic pain. There's various kind of chronic pain. If you say like arthritis, most common, which it comes in chronic pain. Then migraine, it's chronic pain, right? Anything with the visceral comorbidities, like if you have diabetes or if you have chronic kidney disease, that also causes chronic pain because symptoms will cause like neuropathic, पैर में sensations जा नहीं रहे हैं, झुंझुनापन है, या पैर सूज गया है, उसके वजह से दर्द है, आप चल नहीं पा रहे हो, and things like that. So that's basically what is chronic pain in definition. Now, what causes chronic pain, right? Like, and as I said, is always caused by a pre-existing condition. Mostly, अगर आपको कोई condition है, diabetes हो रखा है, arthritis है, जैसे rheumatoid arthritis, अगर है वो, तो वो आपको हमेशा ही pain देती रहेगी, forever it will last with you. I don't want to make anybody feel like, oh, we cannot, recover or we cannot manage. We can absolutely manage it, but we should never give anybody a false hope that, all right, like you'll heal completely. There's a lot of factors involved in it. So once chronic pain is there, if somebody has a chronic pain, what is the basic symptoms they presented, or what kind of symptoms they will complain? Pain जैसे throbbing pain हुआ, numbness हो गया, aching pain हुआ, shooting pain हुआ, burning sensation हो गया, ये सब सारे chronic pains के symptoms है जो presentation होते हैं mostly. काफी सारे factors होते हैं जो chronic pains कर सकते हैं. First of all, जैसे lifestyle. अगर हमारा lifestyle में गड़बड़ है तो chronic pain रहेगा आपके साथ. जैसे आपका diet खराब है, आप सही से सोते नहीं हो, या आपको exercise नहीं करते हो, that is one thing. Most common, which I think all of us actually face now, is stress, right? किसी के जिंदगी में ऐसा होगा नहीं कि stress नहीं है, सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ stress है. That is a really strong associating factor which causes pain in general, acute or chronic. And if you cannot manage stress, that pain will be staying with you forever. Another thing, like mental health issues, like people with diagnosis of anxiety, depression, they also have some kind of a bodily pain which they always feel. They will always complain of aching sensations or feeling tired or burning sensation, heaviness in the body, stuff like that. Also, things which else can cause this, like repetitive strain. अब मेरे shoulder में या एक injury हो गई है, मैंने उसको कोई ध्यान ही नहीं दिया है, दोबारा से कुछ करके उसमें दोबारा से इंजरी हुई है, और ये प्रोसेस चले जा रहा है काफी 3-4 5 6 7 टाइम्स तक. ये आपको इवेंचुअली विल टर्न इनटू अ क्रॉनिक पेन, क्योंकि वो आप हील नहीं कर रहे हो, या पेन होने के वजह से आपको रेस्ट नहीं दे रहे हो, आप हील करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, और दोबारा उस पर इंजरी कर ले रहे हो, तो वो वापस आपको ये रहेगी, और उसको सोल्यूशन हो जाता है कि आप मेडिकेशन में जाओगे, एंड थिंग्स लाइक दैट. देयर इज लॉट ऑफ फैक्टर्स इन इट. और एक चीज जो शायद कम बोली जाती है या लोगों को पता कम होती होगी, अब्यूज, राइट? फिजिकल अब्यूज, लाइक आपको घर में अब्यूज है, या एनी अदर काइंड ऑफ अब्यूज व्हिच people don't talk about. I don't think so in Indian society. It's still prevalent that we mostly as women we talk about abuse. अगर आपको घर पे abuse हो रहा है किसी कारण से, आपको chronic pain होना like अनिवार्य है, होगा ही, आपको कहीं ना कहीं दर्द होगा ही. Same thing, अगर आपका work environment, आप क्या काम करते हो, अगर आपका काम है जो बहुत strenuous है, जैसे heavy वजन उठाना, lifting करना, like pushing heavy carts or pulling carts, stuff like that. If you're doing job like that, that can lead to like a slowly built up of an injury to any like micro tears or micro injuries to the joints, ligaments, muscles, as we say. And then that can lead to a chronic pain as well. अगर
पेन होता है तो सबसे पहले एक और सिम्टम्स जो सबके पास होती है, हम दुखी हो जाते हैं, लाइक वी आर सैड, वी आर नॉट हैप्पी, you know, we are like gloomy, we don't want to talk to anybody, we like to isolate ourselves. Why does that happen? The reason for that is हमारा endorphin level जो है, हार्मोन endorphin, वो घट जाता है. Endorphin is a happy hormone, right? It makes you happy, makes you feel positive, makes you feel vibrant. But अगर आपको दर्द है, सर में दर्द है या कमर में दर्द है, ये एंडोर्फिन चली जाती है. और अगर एंडोर्फिन का लेवल घटता रहता है, हीलिंग प्रोसेस में भी टाइम लेता है, क्योंकि यू नो एज वी से माइंड ओवर मैटर और माइंड ओवर बॉडी, अगर आपका एंडोर्फिन लेवल वगैरह घट जाता है तो शायद आप वो हील करने में या फाइट करने में आपको टाइम लेता है. पहले जैसे मैंने आपको कहा पेन किस तरीके से होता है, बहुत लोग होते हैं डिफरेंट टाइप का पेन बताएंगे. कोई बोलेगा यू नो टाइट हो रखा है मसल, या एक हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, या थिंग्स लाइक दैट. अब पेन जो है एक और चीज है, दैट्स वेरी सब्जेक्टिव, राइट? लाइक आई कैन हैव एन इंजरी एंड आई कैन हैव ए क्रॉनिक पेन, आई कैन हैव एन आर्थराइटिस एंड आई कैन कम एंड टेल यू it's just a moderate pain. I'm able to manage most of my task with the pain. There can be someone else, Mr. Smith or Mr. Jones, who can come and tell, no, my pain is severe. I'm not able to function on a daily basis, or I'm not able to take care of my daily task, right? So pain is subjective. आप उसको, there are scales we use, physiotherapy में use करते हैं, doctors use करते हैं, उसको VAS scale बोलते हैं. उसका मतलब है विजुअल एनालॉग स्केल, जिसमें हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपका पेन 0 और 10 के बीच में आप क्या रेटिंग दोगे. 0 मतलब कोई पेन नहीं है, और 10 थे एक्सक्रूशिएटिंग पेन, अनटॉलरेबल पेन, आप सह नहीं कर पा रहे. जैसे मिस्टर स्मिथ बोल सकता है I have 8 or 9. On the other hand, I can say that I only have like 4 or 5. It completely depends on individual to individual. There is no rhyme or reason for that, and there is no way to manage it as well. So you have to go with the presentation of the patient. Now, diagnosis कैसे करते हैं, right? अगर pain है, chronic है, acute है, neuropathic है, जो भी है, diagnosis, अगर आप diagnose नहीं कर पाएंगे तो उसका treatment नहीं होगा. तो कुछ बेसिक डायग्नोसिस जैसे होती है, ब्लड टेस्ट करवा लिया, EMG करवा लिया, नर्व कंडक्शन टेस्ट करवा लिया. अगर आप फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाओगे तो हम डेफिनेटली आपका पूरा हिस्ट्री लेंगे कि आपको कब से दर्द शुरू हुआ, कहाँ पे दर्द है, कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर था क्या, जैसे आप गिर गए थे या कुछ और था, या आपको ये पेन रेडिएट होती है क्या, अगर कोई मूवमेंट करते हो या पोस्चर चेंज करते हो वो रिलीफ होती है कि नहीं होती है, कि कांस्टेंट रहता है. Those are the questions which actually help you to diagnose like where is the origin of the pain, or I should say that more than diagnose, guides us, guides a doctor, guides a therapist to try to figure out what could be the cause. Until we can fix the cause, we cannot fix the pain, because pain is a symptom, right? वो किसी चीज के वजह से हो रहा है. It's not an ailment in itself. So once you can ask those questions, and if you're able to get those answers from the patient per se, आपको वो पता लगता है कि आपको क्या ट्रीटमेंट करना है. जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल बताती हूँ, बहुत लोगों को ये पता नहीं है, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, हम सबको पता है. अगर ऐसा कोई पेन है जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जाती ही नहीं है, आप लेट जाओ, स्ट्रेच कर लो, चल लो, आराम कर लो, सो लो, पर आपका ये पेन आपको कांस्टेंटली ही है. I'm not trying to focus or tell you exactly the body part, but in general, pain constant है. अगर ऐसा कोई एक पेन है, we all know it's a visceral origin. Visceral origin मतलब आपके किसी बॉडी के ऑर्गन से आ रहा है. जैसे अगर आपको किडनी में इश्यू है, बहुत कॉमन है. किडनी में अगर इश्यू है तो आपको कॉन्स्टेंटली लो बैक में एक पेन रहेगा, राइट? लो बैक पेन बहुत जनरलाइज टर्म होती है, बहुत फैक्टर से होती है. पर अगर किसी ने आके मेरे को बताया कि ये पेन डॉक्टर जी कुछ भी करते हैं तो जाता नहीं है, हमेशा ही पेन है, तो मुझे पता है कि उसका नेक्स्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए. आई हैव टू टेल दैट it might be from your kidneys, so you might want to see a nephrologist, or you might want to see a urologist and figure out what is happening, because that is what is telling you why you have a constant pain, and none of the movement or any change in position helps you to relieve that pain, right? So that is one thing. जैसे हमें पता करना पड़ता है कि ठीक है, आपको पेन किस तरीके का है.
Now if somebody comes and tells me, okay, जैसे अगर मैंने चला तो पेन रिलीफ हो रहा है, अगर मैं बहुत ज्यादा बैठ रही हूँ तो पेन ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमें पता चलता है कि ओके दैट हैज टू कम फ्रॉम द स्पाइन, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर डिस्क. जिसका ये जैसे हमारे स्पाइन के बीच में एक छोटा सा फ्लूइड होता है जो कुशन का काम करती है हमको, यू नो. अगर उस फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है, वो थोड़ी सी निकल गई है स्पाइन के बीच से, तो आपको वो ऐसा पेन होगा. जैसे पैर के तरफ झुंझुनापन है, टिंगलिंग सेंसेशंस है. और अगर मुझे भी किसी ने बताया कि दैट आर द सिम्टम्स एंड आई कैन टेल ओके इफ यू डू सच एंड सच it will relieve your movement or your pain, then I know it is, you know, musculoskeletal हम लोग जिसको बोलते हैं, और जो muscles से या bones related है, जिसको आप treat कर सकते हो, आप fix कर सकते हो कुछ approach लेके. So that is another thing which, you know, you want to find out. As I said, it's very important to figure out the cause, root cause of the pain and the origin of the pain. Then only you can chart out a way how to treat the symptoms. Now, अगर पीटी में आने से पहले मैं ये बताऊंगी लोग क्या करते हैं. अगर दर्द है, दर्द की गोली ले लो, या सर दर्द हो रहा है कोई एक दवाई ले लो, सर दर्द हो रहा है एस्पिरिन ले सकते हो, कोई भी टाइलेनॉल ले सकते हो, anything like that. If you have constant pain, people will usually go to a doctor. Like for in US, most of the pain is managed by pain management doctors, right? So they are specialized doctors. They only figure out how to take care of someone's pain. So they'll go to a pain management doctor, and then they'll prescribe most probably like a NSAID or जिसको बोलते हैं non-steroidal anti-inflammatory drugs. Opioids देते हैं, बहुत strong होता है. Muscular relaxant दे सकते हैं अगर मसल टाइट बोल रहा है कोई आके. स्टेरॉइड्स तो डेफिनेटली ही देते हैं, और या तो फिर बेसिक लाइक एसिटामिनोफेन, टाइलेनॉल ऐसा कुछ दे सकते हैं. कभी कभी हमने ये भी देखा है कि अगर क्रॉनिक पेन चल रहा है और आपको इतना ज्यादा पेन है कि आपको सीजर्स आ जा रहे हैं, यू नो, आप फेंट हो रहे हो, आपको यू नो, यू आर हैविंग सीजर मूवमेंट, then you might also see like a prescribed of anticonvulsant medications to prevent, you know, आप दर्द के वजह से इतना ज्यादा दर्द हुआ कि you have a seizures and you fall down and then you have a head injury, you definitely want to prevent that, and that can be taken care by taking some kind of an anticonvulsant medications. And now जो नया आ रहा है, I'm not sure how much it is being utilized or tried here right now, is medical marijuana. यूएस में मैं जितने पेशेंट्स देखती हूँ, हमारे 2 नर्सिंग होम में बहुत पेशेंट्स आते हैं, we see a lot of patients being prescribed by a pain management doctor medical marijuana. While, you know, it has plus and minus, there's more research to be done on that to figure out exactly if it is helping or not helping. Some of my patients have personally told me that yes, it helps. They rather take medical marijuana than take steroids or opioids जो dependency बना देती है. On the same contrary to the same fact is that medical marijuana जो है वो आपको relief देती है, but anything which you are constantly taking oral, there are high chances कि आप उस पे भी dependent हो सकते हो. अगर marijuana prescribe किया है और आपको mental strength नहीं है, capacity नहीं है कि आप dosage उतना ही लो जितना prescribe किया गया है, you can also have a dependency on that. You know, there are people who at later on they just become dependent. They can't function without marijuana, or they want to have more higher dosage of marijuana. And trying to take medical marijuana, they also start taking recreation marijuana. हमें पता है marijuana लेने से you feel high, you feel happy, you know, you are like in a la la land as we say, or like you feel good, you feel grandiose about yourself. So I think people try to take that, so you have that feeling and you can forget about your ailments or, you know, aches and pains जहाँ पे आपको हो रही है. So that's one thing. But, you know, it's again, as I said, it's more tests to be done on that before we can figure out exactly the efficacy, and also more regulation which needs to come to make sure कि, you know, जो dosage दे रहे हैं वही दे रहे हैं, और recreation marijuana में भी control आ रहा है ताकि लोग overdose ना हो जाए किसी भी तरीके से. Any medication for such matter, you know, NSAIDs, steroids, opioids, overdose होने का बहुत chances है. यूएस में तो बहुत ज्यादा ड्रग डिपेंडेंसी है, ओपियोइड्स पे हमें दिखते हैं लोग कि अगर आप
medication nahi de rahe ho, like they really behave in an aggressive manner. We have also encountered that, like personally in our sessions, like people are aggressive about it. They like almost become physically aggressive and violent towards the therapist or anybody who's trying to help them out. That's, you know, that's the part of the medications. Now, अगर आपको medications ले लेना है, alternative approach क्या है जो आप try कर सकते हो? Again, first of all, physical therapy, definitely. I am a physical therapist. I will try to say that, you know, it will help. Acupuncture, I have seen good results on acupuncture because it's a needle therapy. Side effects nahi hoti hai. Acupuncture definitely helps. Second thing is, agar aap meditation, relaxations, ye sab karo, that there's no alternative to that. Like there is no way I can say that it can, you know, there's anything less or like more important than trying to relieve, you know, relieve your stress or trying to have a mental control over the reason for your pain. तो अगर हम लोग PT में वापस जाएंगे तो हम PT sessions में अगर कोई patient आता है, then what do we do about it, right? As I said previously, आप पहले diagnose करोगे, आपके सवाल जवाब patient से करके आपको पता लग जाएगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि पेशेंट को पेन किस कारण से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, and things like that. Once you have that, you can figure out a plan of care for them, as we say. TENS. TENS is also called as trans-electric nerve stimulation, you know, or transcutaneous electrical nerve stimulation. हम लोग अगर कहीं पे पेन है, we try to figure out to give a TENS on the patient, supporting the nerves, which supplies the blood supplies to the organism, right? Or to that particular area. That definitely helps to relieve. Another thing in PT which we use is ultrasound. It's not diagnostic ultrasound. जैसे लोगों को पता है कि हमारा ultrasound होने वाला है, you know, you see your visceral organs and stuff. No, it's a treatment ultrasound. It has various modalities, frequencies we therapists use based on the, you know, symptoms and the pain intensity and the locations and other factors. That also helps in improving pain. Another thing which we use is IFC, interferential current. It is similar to TENS. अगर मुझे layman term में बताना है, similar to TENS, but थोड़ा सा frequency वगैरह change होता है, तो हमें पता है कि which will help depending on the type of pain you are telling. If you have, like, if you tell me that, you know, you have more of a burning sensation, traveling pain, I will try to give you TENS, not IFC. But if you come and tell me कि localized pain है, डॉक्टर साहब इसी जगह में पेन है, पेन कहीं जाती ही नहीं है, इसी जगह में है, ये मूवमेंट करने से रिलीफ होती है, ये करने से एक्सैजरेट होता है, then I'll try to give you IFC because मुझे पता है it's already localized and I just try to heal that area by giving more blood supply. And other things also what we use is like shortwave diathermy. उसका use अभी धीरे धीरे घट रहा है, but it is also beneficial. Now it varies from patients to patients. Some patients really benefit, some don't. So, you know, there's no like rule of thumb that these chronological orders will benefit. No, it only varies from patient to patient. After that, you know, even this all are the adjunct treatment what we do, right? वो आपने कर दिया, patient feels great about it, like, hey, I am feeling pretty good right now. But उसको आगे ठीक करने की क्या जरूरत है और क्या करना जरूरी है? Things which are important is that to do stretches, right? अगर हमें पता है जैसे low back pain है, हम definitely सारे therapists, you know, will try to demonstrate them what stretches or what exercises you can do. अगर initial जब pain शुरू होता है, nobody will tell you, go back home and start doing tons of exercises for your back. No, you have to let that area heal. अगर pain intensity घटेगा नहीं, तो हम चाहे कुछ भी कर ले आगे, वो heal नहीं होगा. So first, the foremost criteria is that you must bring the pain intensity down, and, you know, you must try to localize it. एक बार आपका pain intensity घट गया, it is localized, it is controlled, that's when you start giving exercises to the patient. And then most of the exercises will definitely include any stretches. Like हम लोग कभी भी किसी को नहीं बोलेंगे कि आप exercise कर लो और उसके पहले stretch ना करो. Stretch is also a part of warm up, right? That helps to loosen up your muscle, that helps to loosen up your joints, you know, ligaments,
and your synovial fluid blood circulation बढ़ा देती है. जब आप stretch करते हो, your body relaxes. After that, you must do some kind of a strengthening exercises of the muscle. अब अगर जैसे मैं बताती हूँ, I'll move from back and I'll move to the knee joint, right? हम सबको पता है arthritis, right? Common है, बहुत common है osteoarthritis, otherwise called as OA, बहुत common है. क्यों होती है? Genetic भी हो सकती है, family history है बहुत ज़्यादा arthritis की, very likely that somebody in the family will get it. Obesity, अगर आपको obesity है, you are bound to start developing knee pains, right? Like your body can only tolerate so much of your weight, and our knee is the one which takes most of our body weight. So if you have obesity और आपका weight बढ़े जा रहा है और आप control नहीं कर रहे हो, you will start developing, pain in your knee या घुटने में दर्द होगा. तो अगर OA का patient आया, जैसे मैंने बोला, treatment देंगे, IFC देंगे, heat दे सकते हैं, heat pack दे सकते हैं. Once that is controlled, we'll tell them, आप ये कुछ exercises होती है, strengthening exercises होती है घुटने के लिए. अगर मुझे बाद में demonstrate करना होगा, I'll show you guys. You do those exercises to strengthen your quadriceps muscle, to strengthen your hamstring muscles, क्योंकि जो muscles आपके joint को support करती है, वो muscles अगर strong नहीं रहेगा, तो मैंने अगर आपको treatment करके relief दे दी, you'll come back with the same pain after like couple of months or or couple of weeks maybe. You will start complaining, because if you cannot keep your muscle strong, ligament strong, which supports the joint, you will start feeling that discomfort again. So that is like one of the treatment for PTs, what we will be doing. So PT के लिए strengthening, stretching is a must. Like there is no way around it. आप treat करिए, even if you have like neurologic pain, right? Like अगर किसी को stroke हुआ है, you have stroke, you will have one side of your body which might be impacted. That also will give you a lot of pain, because people won't be able to move, people won't be able to walk, people will complain about like stiffness in their joints and stuff. That also needs to be controlled by using modalities and followed by stretching and strengthening exercise. That's the key to success or prevention of exercise. There's no way around it, right? Now, कुछ जैसे ये तो PT का role हो गया, हम क्या बता रहे हैं. Also yoga. Oh my God, like I'm not a yoga specialist. I do some yogas, but I'm not certified or I'm not specialist in yoga. But definitely yoga is one key thing which will help you preventing your pain or to getting it worse, right? जैसे pain management करते हैं, इसको बोलते ही हैं management, because उसको आप हमेशा के लिए शायद ही treat कर पाओगे. So yoga helps. Again, relaxation helps. कुछ lifestyle changes जो लोगों को करना चाहिए, and that's important. Like definitely your diet. Oh my, it's very important कि आप diet change करो. You have a balanced diet. Try to avoid eating junk food. हमें बहुत दिखते हैं लोग with a lot of junk food leading to obesity, and leading to various ailments, which can be cardiac, neurologic, it can be kidney related, anything. Lifestyle modification is very important. Having a balanced diet, आप सही से खाओ. Stress management, हम जैसे पहले भी मैंने कहा था, हम सबके जिंदगी में stress है, कुछ ना कुछ stress सबको ही है. How do you manage the stress is very important in helping you to prevent any pain. अगर आप सोते नहीं हो सही से, lack of sleep, common, right? Most of the people are not even getting the 7 hours of recommended sleep every day. People are sleeping probably around 4 to 5 hours. If you don't get that, you will start developing chronic pain. You will become irritable. You will become, groggy in nature. आपको गुस्सा आएगा बहुत तेज. आपको इधर उधर tightness feel होगा, pain होगा. It's very important that you get the recommended sleep, because हम जब सोते हैं, our body heals in that process, right? Because we're not doing much. It's an automatic body mechanism कि heal होगा धीरे धीरे. आपकी जितने भी problems है, वो heal होना शुरू होती है. Then I must say कि जैसे exercise करना, regular exercise, 30 minutes a day, 30 minutes, that's it. आधे घंटा exercise रोज करिए. It will prevent you from any kind of injury. Repeated injury से prevention करती है. आपको जो problem है उसको improve कर देती है, क्योंकि blood circulation बढ़ जाता है. अगर जैसे joints की बात करें, exercise करने से blood supply बढ़ने से joints become loosen up, your muscles loosen up, right?
तो आप जो पहले टाइटनेस वगैरह फील करते हो वो धीरे धीरे घटने लगेगा, आपको वो तकलीफ होगी नहीं. So it's very important that you do regular exercises, manage your stress, get enough sleep. Of course, if you want to like other modifications to your lifestyle, like don't, if you can avoid being dependent on alcohol, stuff like that, that helps. And then active रहिए. Sedentary lifestyle is a total no to pain and chronic pain. वो आपको अगर दर्द है वो आपको बढ़ा ही देगा pain. Another thing which is now just for the job and people who are working from home, हम लोग सब कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हैं. That's like most we barely move, right? We get up from our chairs barely, maybe to go to the restroom or take a lunch break or a coffee break or a tea break. But it's advisable क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा बैठे रहते हैं, move नहीं करते. Every hour, just get up from your chair, walk, take 5 steps or 6 steps, and come back and sit. वो क्या होता है आपका joint, it relaxes your body, it stretches out all the joints. नहीं तो सारे joints जैसे it's in a bent position, बैठे हैं तो all knee joints, your hip joint, your ankle, everything is in a bent flexed position जैसे हम बोलते हैं, या घुटना मुड़ा हुआ है, वो खुल जाता है जब आप खड़े होगे, stretch करोगे थोड़ा सा, you stretch your back and stuff, it helps. That is recommended. That is something I have been implementing in my life, and I've also been asking my staff to do it. That helps. And same thing I recommend to the patients. Once we have patients who, they have healed or improved kiya hua hai, their pain has gone down, I will always say, when we recommend a home exercise plan, well, I'll always say, no matter how, you do all these exercises, but once you go back to your old lifestyle or habits or what your day-to-day task, if you don't do basic movement, or if you don't prevent yourself from having a sedentary lifestyle, you'll go back to developing your pain and stuff. And there are other ailments also which comes with sedentary lifestyle, which we are not going to discuss here, right? Now, ये सब करके, can we completely take care of chronic pain, right? That's a question so many people will ask, or so many people सोच सकते हैं कि can we take care? We can prevent it from getting worse, but we cannot completely get rid of it. हम पूरी तरीके से chronic pain जो है, acute pain होगा, we can get rid of it. But if it's a chronic pain, चले आ रहा है, जैसे मैंने बोला, chronic pain is more than 6 months. अगर ऐसा कोई pain है, completely to get rid is difficult. Now, I don't want to say impossible, but it's difficult. It's various factors आती है. Also things जो हम लोग अभी adjunct करते हैं, जब मैंने बोला PT सेशन हो रही है, वो तो ट्रीटमेंट है, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दवाई दिया. You also need to have some kind of a cognitive therapy. वो हेल्प करती है, बिकॉज पेन मैनेजमेंट इतना वाइड है, वर्सेटाइल है, इतना वास्ट टॉपिक है कि उसको अगर डिफरेंट तरीके से ना मैनेज किया जाए तो वो शायद कंप्लीटली ना घटे या कम ना हो. तो like if you go to a cognitive therapy or psychosocial session where you're talking to a psychologist or psychiatrist, they'll help you, because आपका mind, if it can fight what you have, your ailment, अगर आपको mind fight कर सकती है, then it definitely helps your body to heal faster. अगर आपका mind ही कहेगा आपको नहीं, ये तो जाने वाला नहीं है, ये हमेशा ही रहेगा, ये ठीक नहीं होती है, then it's very difficult, no matter how hard we try, right, to get rid of, and we try all the treatment, every approach we know in our books, वो help नहीं होती है. Because जब ऐसा pain होता है, लोग डिप्रेशन हो जाता है, किसी को एंजाइटी हो जाता है, सोशल आइसोलेशन तो बहुत कॉमन है. अगर मुझे घुटने में दर्द है और मैं चल ही नहीं पा रही हूँ तो मैं कभी भी किसी से मिलने नहीं जाऊंगी, घर में बाउंड हो जाऊंगी, social isolation होगा, that will lead to various other ailments which will develop, right? It's a vicious cycle. एक चीज होने से बाकी और भी काफी चीज develop होती रहती है. So if your mind can overcome that hurdle, it helps your body physically to heal and stuff. So that's very important, and it's very crucial in the total treatment session. Now, अगर
मुझे कहना like you know like risk factors क्या है, मैंने पहले भी बोला था, genetic factors, obesity, you know, like age can prolong it and stuff like that. Smoking, alcoholism, you definitely don't want to do it. Prognosis, pain management ka prognosis, about 30%, 30 to 50%, depending on the location of the pain. Kahan pe hai, type of pain, intensity of the pain. That totally determines your prognosis. If your pain intensity is less, your prognosis is going to be better. And also the locations and comorbidities, जैसे बोलते हैं, अगर मुझे खाली pain है, मैं young हूँ, otherwise various, I'm really healthy, I don't have anything much going on, I will recover faster. But if I have a lot of other things, I have like cardiac issue, or I have like a neurological issues and stuff like that, then this pain medication or the pain treatment, it will take a lot of time to heal, because I also have to take care of the other ailments, right? जैसे कुछ ना कुछ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, एक vicious cycle है, ये होने से ये होता है, ये होने से आगे और काफी सारे topics like या काफी सारे problems body में develop होना शुरू हो जाता है. To be honest, like even I feel sometimes, like if I'm only sitting for a long time and I haven't moved, the next day I'm like, darn man, I'm like pretty stiff, like बहुत tight है मेरा body, I feel it. So I know what I need to do. Like again, as I said, 30 minutes exercise, stretching, key stretching करिए. अगर कोई योगा प्रैक्टिस करता है, योगा करिए, very helpful in managing your chronic pain, क्योंकि आप 100% क्योर नहीं कर सकते, you just have to manage it, Anything else I need to cover? Okay, last time I think I've already covered it, but again, like क्या करती है, complications क्या हो जाती है, आपका quality of life totally deteriorate हो जाता है, आप socially isolate हो जाते हो, दोस्तों से मिलते नहीं, बाहर नहीं जाते हो. अगर आपको कोई activities करना पसंद है, hike पे जाना पसंद है, चलना पसंद है, you completely stop all that. Like you're not going to do any of those. That's really like, that's the worst thing which can happen with pain, because your lifestyle will change. It will take a 360-degree turn if you can't manage your pain or any other ailments for matter. I think I've covered most of the topics, but if anybody has any questions on pain, type of pain management, I'm more than happy to answer. Thank you, Navneeta. That's wonderful. I think you covered the entire gamut of pain. And hearing you itself is a great relief from pain that we sometimes suffer from. I wanted to ask you something. You had said that pain always comes from some underlying cause that you have in your body. Correct. What do you say about pain that comes with an, say, that has no etiology? There's no particular cause for it. Correct. People say we have pain, but you're not able to pinpoint the pain. Unknown etiology, as they say. Yes, it's also called as adenology, right? Yeah. Yes. So there are pain, which there's more research to be done on that, because you don't know, as I said, right? If you don't know the cause, it's very difficult to figure out where the pain is originating. It's mostly psychosomatic. If I have to say, it's mostly psychosomatic. If you can't figure out the cause or the underlying factor, my recommendation or advice would be that, you have psychological treatment go. Like, that should be the route you should take before you figure out कि क्या हो रहा है. Because आपको कोई बताएगा ही नहीं कहाँ से पेन है, बस बोलेंगे मुझे हमेशा पेन है. कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ से होता है, वो जवाब नहीं दे पाएंगे. So if that's the case, you should go like to a psychiatrist or psychologist, talk to them. Maybe there is underlying something going on in your mind, or you had something like a trauma in your life which we don't know, and that will help you to relieve it. And you said pain is measured on a scale of 1 to 10. Correct. That's quite fine. It's subjective, of course, as you say. But Yes. How do you measure pain in children? Yeah, it's very hard, right? Like, visual analog scale is very accurate when you use on an adult. Like, आप बता सकते हो कि यार 1 है एकदम 0 है, 10 pain है, excruciating pain है. Sometimes you also describe it as like it's a labor pain. If you're giving birth to a child, that's the pain which is 10. But अगर किसी बच्चे को ये चीज समझाना है, they are not going to understand, right? When I have seen kids, I will tell, अब तुमको इतना दर्द है कि तुम खेल कूद नहीं कर पा रहे हो. You like to play like soccer, आपको खेलने का बहुत शौक है, you're not able to kick your kick the ball, or आप उठ के दौड़ नहीं पा रहे हो दोस्तों के साथ, or if you're like commonly if you're playing cricket, आप बैटिंग नहीं कर पा रहे हो, शॉट नहीं खेल पा रहे हो, तो
that's how you describe. Like you have to connect it to an activity they do or they enjoy, so they'll tell you. Then you know how it is. If they are telling, हाँ उतना ही है, फिर भी मैं खेल लेता हूँ, उतना तकलीफ नहीं है, बैठ जाने से आराम हो जाता है, then you have to just figure it out. Or it might be mild to moderate, initial moderate. But अगर बोलते हैं I can't play, मैं हिल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूँ, बैडमिंटन नहीं खेल पा रही हूँ, या मैं सॉकर नहीं खेल पा रही हूँ, then you know it's a very severe, like high scale of pain, and then you have to approach it. That's great. Over to you, Kishore, for your question. थैंक यू सर। डॉक्टर नवनीता, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया। आपने नी पेन के बारे में बताया, जो कि आजकल घर घर में मौजूद है। हर घर में किसी न किसी को नी पेन है, और अर्थराइटिस है या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या हमें थोड़ा सा डेमो देकर बता सकती हैं कि वो एक्सरसाइज किस तरह का होगा, अगर संभव है तो, पॉसिबल है तो? डेफिनेटली मैं ये हेडफोन निकालती हूँ। आई होप कि आप लोग को सुनाई देगा हेडफोन निकालने के बाद। अगर नहीं तो बताइए, आई विल स्पीक लाउडर। ठीक है। सुनाई दे रहा है? ओके, तो मैं थोड़ा पीछे होती हूँ। ओके, जस्ट चेकिंग माय। सो I don't know how much of my visual field you have. I hope it might be. So I'm just gonna sit on a chair. If I have to, can you see my legs actually? Here you go. Can see, yeah. Okay, there you go. Right. So here's my knee. मेरे घुटने में पेन है। मैं आपने बताया कि जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे पहले मैंने बताया ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे, क्लिनिक में जाओगे, they will put IFC or they'll put heat. अगर initial stage of inflammation है, one thing I want to tell all viewers, before I move, otherwise I'll forget. अगर आपको कोई इंजरी हुई है, पेन है, फूल गया है, कभी हीट मत लगाइए immediately. First 72 hours should always be ice. So you reduce the inflammation. आपका जो swelling है, सूज जाता है, वो घट जाए. After that is when you go for a heat treatment. If पहले ही हीट कर लोगे, हीट क्या करती है, बॉडी पे ब्लड सप्लाई जगह में बढ़ा देती है, आपका और सूज जाएगा पैर. So that's just common for everybody, anybody to know, right? बहुत लोग जानते नहीं, दर्द होता है, अरे यार कुछ लगा लो हीट वगैरह. You shouldn't do that for 72 hours. Okay. Now once you have treated, I'm going to tell you basic, like बहुत simple exercise है, टीवी देखते वक्त कर सकते हो. It's so simple. Just kick your leg in front. अगर आपको दिखाई दे, just kick your leg in front. Kick your leg. If you can hold it, अगर आप पकड़ के रख सकते हो, like for 5 to 10 seconds, बिना आपका breath hold किए, that helps you. That helps to strengthen this muscle of the body, which is called as the quadriceps muscle. हमारा बॉडी का मेजर मसल है, काफी बॉडी वेट लेती है. It's a very strong muscle. 4 muscles है इसमें. You need to strengthen this muscle. So this is one of the first thing you need to do. Okay. Second, for the hamstring, what we call is called hamstring curl. So I'm just gonna stand up. I'm gonna use this chair as a support. Just bend your knee like that. See, जो भी movement मैं कर रही हूँ, वो movement bending से ही related है. If I'm just bending into the back side, you can feel a compression or like a tightness on the back of your muscle. That tells you that your hamstring muscle is working. So if you again bend and hold it for some times and relax it, this will help to strengthen your hamstring. And the front one, अगर आप सीधा kick करोगे, that helps you to strengthen your quadriceps. ये 2 बेसिक एक्सरसाइज करने से घुटने का पेन बहुत बढ़ जाता है. It's like that's like golden exercises for the knees. थैंक यू डॉक्टर नवनीता, आप अपने कैमरा को एडजस्ट कर लें. थैंक यू. एक सवाल और है. आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एक्यूट पेन में सीजर भी हो सकता है. मैं कई लोगों को जानता हूं जिनको गैस्ट्राइटिस है और कई बार चेस्ट पेन होता है और स्टमक पेन होता है, जिसमें कि वो सीजर जैसा होता है. क्या वो सीजर ही है और इसी वजह से हो रहा है? एक्चुअली सीजर का सिम्टम्स है. क्या होता है, हमारा पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में कि यू आर नॉट एबल टू, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो बॉडी, राइट? तब यू हैव दैट सीजर लाइक कन्वर्शन जो बोलते हैं हम लोग, आपका बॉडी हिल रहा है, लाइक यू आर अबाउट टू फॉल एंड यू हैव जर्की मूवमेंट्स इन द बॉडी. वो सीजर होती है. डेफिनेटली वो पेन के वजह से ही आ रहा है. तभी मैंने पहले शायद शुरुआत में बताया था, कभी कभी जब दवाई देते हैं डॉक्टर्स आपको एंटी कन्वल्सेंट प्रिस्क्राइब करेंगे.
अगर उन्होंने आपने बताया है कि जब डॉक्टर साहब मेरे को पेन होने के बाद या ऐसा एपिसोड होने के बाद इतना ज्यादा होता है कि मैं गिर जाती हूँ, पैर मेरे को जर्की मूवमेंट होता है या फैमिली मेंबर रिपोर्ट करते हैं अनकॉन्शियस हो जाता है बंदा, दे विल डेफिनेटली गिव एंटी कन्वल्सन मेडिकेशन, क्योंकि वो प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप पेन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसके वजह से ये हो रहा है. सो यस, डेफिनेटली it is a seizure. It is seizure. Thank you, Dr. Navneeta. Over to you, Mr. Shankar. Thank you, Kishore. Thank you, Dr. Navneeta. It was wonderful having you. I think in the next session onwards, I think when we have you in the next session, we would like to have more of demos so that we know how to control certain types of pain, especially when people say that you're a pain in the neck. I think how to control the neck pain is something that probably we all as IT professionals should know. Yes. Thank you very much. It was wonderful having you. I think more discussion we'll have in the future. Thank you. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity and thank you for having me. Thank you. All right. We now move on to quiz number 1. Yes, it's quiz time now. And the first quiz is, which of the following chronic pain conditions can yoga help with? A, arthritis, B, lower back pain, C, migraine, and D, all of the above. The answers will be given at the end of the session. We now move on to welcome back. We are now hopefully seeing the fag end of Kovid, a virus that held the world to ransom. We lost many, economies suffered, people lost jobs, and the world saw a paradigm shift to new norms. Health4All held a series of dialogues with epidemiologists, community medicine experts, and others. In their words, we shared with you the best of COVID education. Over to best of COVID education video. Barely a year after the vaccine developers reported spectacular successes in SARS-CoV-2, the latest variant of virus has presented them with a new challenge, with Omicron spreading at unprecedented speed and its ability to dodge immunity, whether from previous infections or vaccinations. The new threat has galvanized vaccine developers and public health officials. What direction should they be pushing? Should it be a booster dose, or an Omicron-specific vaccine, or probably a bolder option of universal coronavirus vaccines that would aim to protect against every mutant of SARS as well as other coronaviruses that nature might throw up at humans in the future? Probably a vaccine booster based on hybrid spike sequences of SARS-CoV and SARS-related viruses. When you say a pan-coronavirus vaccine, which could be a kind of universal coronavirus vaccine, do we need that? Yes, we actually need a vaccine which can help us not only to fight against the ongoing variants, but also capable of providing us a protection against any future variant which we do not know that what level of mutations and where all those mutations may appear. But of course that is a work in progress. So for the moment, any such thing in a very limited time frame when we are seeing this new variant Omicron may not be a practical possibility.
So we probably have to think about some other possibilities that we probably have in hand, and we can actually apply to actually tackle this upcoming situation by the new variant called Omicron. Now the question comes is that what are those possibilities that we have in hand? Now I'll answer your first question, that what happens when we got the natural infection or when we got the vaccination. How much that initial immunity is going to help us against this variant called Omicron. So if you little bit look into the details of the Omicron, there is a huge mutation, right? There are almost close to 50 mutations happen since this particular variant. Majority of them lies in the spike protein, which is required for the interaction with the host cells. And this is something which what we are assuming, that those multiple of mutations might be helping in increasing the transmissibility, maybe actually increasing the immune escape of that variant. When we say immune escape, mostly it relies on the antibodies, the analysis that yes, it may escape a lot of antibodies. So now if we put this context into the relation of infection or vaccination acquired immunity, yes, there are most likely chances that we get a big hit on our antibodies by this variant. That may actually lead to a scenario where we may acquire infection. We may acquire reinfection even if we were infected before, even if we were vaccinated. But we should not forget that our immune system does not only rely on antibodies. We do have the T cells that comes into action when it is required for a protection against a virus. And here, on the basis of the current analysis that we have learned is, although there will be a major hit on the antibodies, there will be a very marginal hit expected on the T cells, which may actually help us to coordinate the response with antibodies and provide the protection. So the possibilities are, we may have good T cells that we have acquired from vaccination, previous infection, or previous infection plus vaccination, that will control the virus at the very early stage, control the Omicron at a very early stage of infection. So we may not get into the severity of the disease, but we may still have the infection. So that is something which is from what we have right now. With your experience in Noida for so many years, yes, how do you say how you've been able to rehabilitate COVID patients both physically and also mentally when they have fears? Especially you come from an area where people probably might be you have a combination of the IT crowd plus a crowd from the rural areas. So how were you able to rehabilitate those two segments of population? Sir, actually, I was there in the field during the COVID pandemic. In the second pandemic, I have seen people panicking and dying in front of me. So basically, still I am treating the patients of post-COVID fibrosis, lung fibrosis. So इसमें basic idea ये है कि COVID treatment के बाद patients की जो panic situation होती है, still they are fighting. Many patients are fighting with COVID-19 still post-COVID fibrosis. Mental illness is the major concern. They are panicking whether I am going to survive or not. Their family members are on oxygen support, still on oxygen support. So mental illness सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे. When we speak of rehabilitation of COVID patients, how long should a COVID patient be careful before he resumes normal activities, especially in the light of long COVID and Omicron? What about COVID patients with comorbidities? I don't think there is any one size which fits everybody. That is not a response. It has to be tailor-made depending on how the person has fared and what the comorbidities are and what is the support system around the person and what kind of help and assistance the person has received. It will depend upon individual factors rather than one size fits all advice, please. Yeah. So it should be actually, people should be careful according to their, whatever is their comorbidities or what they have with us. And as you said correctly, that there is no one size fits all.
But should people with comorbidities be more careful? I don't think there is any doubt on that. And what about rehabilitation of mental health patients? You mean rehabilitation of what exactly do you mean by rehabilitation? People who are stressed out due to COVID and who had issues with that, the fear factor and other things that they had. How do you bring them back to normal life? सर जी, बड़ा सिंपल सी बात है हमारे देश में और सारी दुनिया में, और एक हिंदी में मुहावरा है जिससे चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती। राम से बड़ा राम का नाम, उसी तरह से डर से ज्यादा बड़ा है डर का डर। जब तक आप डर के डर से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं सामना कर पाएंगे, और सामना करने के लिए डर से तो बाहर आना पड़ेगा। So we need to come out of fear that is there, and how do you make people come out of fear? डर का सामना करने की सर 4-5 स्टेजेस होती हैं। हर व्यक्ति जब किसी भी अनहोनी घटना से गुजरता है तो वो कुछ स्टेजेस के थ्रू गुजरता है, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, जो कि लेकिन ये बात पुरानी हो गई कि कोविड अब 1.25 साल से देश में है। दूसरी स्टेज यही होती है कि हम उससे लड़ते हैं कि भाई मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। आमतौर पे अब जो हम इस स्थिति में हैं तो शायद ये वाली स्थिति भी लोगों की या तो ना हो या कम हो। तीसरी स्टेज होती है बार्गेन करने की, यार कुछ ले दे के निपट जाए, कुछ ऐसा कर लो, कुछ वैसा कर लो। उसके बाद आता है जिसे कहते हैं उदासी का दौर, कि अब तो सब कुछ हो गया, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, मेरे घर वालों को हो गया या हो जाएगा और अब कुछ हो नहीं सकता। फिर उसके बाद चौथी स्टेज आती है जिसे हम लोग एक्सेप्टेंस। जब वो स्टेज आ जाती है तब इंसान अब जो भी समस्या है उसके लिए अपने साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज, इमोशनल एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिप्लॉय करता है, कीपिंग इन माइंड द ओवरऑल बिग पिक्चर, और फिर उसके बाद ही वो सही तरह से रेस्पॉन्ड कर पाता है। Dr. Chaturvedi, the Prime Minister last night approved vaccination for teens in the age group of 15 to 18. He has also approved a booster dose for frontline workers and people above 60 with comorbidities. What are your views and what's your reaction? That was awaited for a long time, because not the medical fraternity, especially IMA and other people, were suggesting that we must work out for a booster dose. It's like preparation for the war. We know that probably it's possible that maybe a third wave or whatever you say, there may be increase of cases. At that time, you require a very confident frontline workers. If your workers are not confident, if I am going the war and if I don't have those protections, probably I'll feel more hesitant. I'll be more confident as a healthline worker if I am protected. So it was going on for last 15-20 days, this thing. So that was the most appropriate and the most timely announcement by our Honorable Prime Minister. And not only vaccination, actually vaccination, beyond vaccination is also important. What he told, that vaccine is important, but we have seen in Europe what happens even after vaccination. What is happening? In fact, there are countries which are almost 100% vaccinated, but they have so much corona. So we really don't know. Vaccine cannot be the only thing. So vaccine is one, but he also added one thing, I must tell you. He says, please don't forget what we learned. We learned about mask. So he again told about mask. Otherwise, we are all discussing about mask every day. Probably everybody knows about it. But when it comes from Prime Minister's, from this statement come from Prime Minister, please don't forget your mask, don't forget the washing of hands, the social distancing. Repeatedly, if we talk, especially coming from Prime Minister's statement, then it becomes very, very important. So we have different tools. We don't, not only vaccination, we have vaccination,
We have other tools which we have learned from many years, from hundreds of years. We have learned that how to stop the pandemic by putting on the mask and the hygiene and distancing, social distancing, and by talking behavior. I always add to it the talking behavior. When you are talking to each other, that is a time when you are excreting the virus's maximum. So when you are talking, so kindly don't talk face to face, especially on the dining table, because once you're on dining table, you don't have a mask with you. I first will start with you on your current, on your views on the nasal vaccine that has been announced that it is supposed to come early next year. What's your viewpoint on this? I guess we should wait for more data both about DNA vaccine and the nasal vaccine, but they seem promising, especially the ease of administration. But I want to go back to what Dr. Chaturvedi and Dr. Panda both said so beautifully. Dr. Chaturvedi in a very elaborate, detailed manner, and Dr. Panda with his inimitable style, pithy and yet hitting hard. I will completely agree with, as a psychiatrist, as a behavioral scientist, also trained in public health and epidemiology, in fact, egged on by Dr. Nath and Dr. Panda kind of experts, I want to say a couple of things about that interface between behavioral sciences and public health. One, I 500%, 1000% agree with Dr. Panda about the term social distancing. I remember having said it on Doordarshan on 22nd March 2020, just as we were beginning the lockdown. The trouble is, please understand, not much can be done now because the European tradition saw it as social distancing. For us, it is important to emphasize what Dr. Pandey said, and I'm hoping that will happen. Two, the last point that he made. See, for last few years, many public health professionals and a few of us behavioral scientists have been trying to get across to the masses, and it is beginning to happen. I see that your behavior, your health status, Shankar, or my health status, to a significant extent will depend on my lifestyle and my behavior, in addition to the genome and the genetic risk. But that behavior is important for one's own health status. Just as that was beginning to happen in our countries, at least minimally to more, now we have to realize it to the next level. And I call it as interdependence of healthy behavior. Like Dr. Pandey said, not only we should all feel one in fighting this epidemic, but we need to realize that amongst the 5 of us in a family or 20 people working in a team, everyone's health status is going to depend on how everyone else behaves. So it will not be enough, Shankar, for you or me or Kishore Malviya to behave well, responsibly for one's own health. Among the 3 of us, if we are working together daily, and if one of us doesn't behave responsibly, all of us are at risk. So this idea of passive risk that came into health field from the tobacco, if you remember, is very crucial to get across, and that is what we need to do. One more triangle that I want to draw. I don't know if I said this on your shows earlier, but again, I've been trying hoarse about this, like the issue of physical distancing and this. Even before the biological vaccine came up and was administered, it was much more important. But the crucial part is that even with the biological vaccine, now at its late stage of implementation, behavioral vaccine does not lose its importance till this virus actually becomes endemic. We'll keep having this, call them whatever, crest, peaks, whatever, recurrences of this viral epidemic right now. What's important to recognize is that, like in every other sphere, and again, allow me to elaborate, for treatment of blood pressure or heart attack, for irritable bowel syndrome, for bronchial asthma, for diabetes, forget for depression and alcoholism for sure, it is the joint effort of life sciences and social sciences both that will help. The biological, pharmacological treatment methods or prevention methods and the behavioral, socio-behavioral means. And so, with this virus and its epidemiology, there is no go but to have both the wheels running jointly, the biological vaccine and the behavioral vaccine. The dream patterns have changed in COVID patients. That is,
There are some strange dreams that they come across. Have you come across anything of that in any of patients whom you deal with? So it's totally depend on the way you are taking your surroundings or the situation you are taking. Sleep, what is dream? It's your unconscious mind that is telling you that you are whole day you are analyzing something, you are seeing something good or bad. I have seen people are coming that whole day before sleep also they were watching news. And new channel these days, they are just showing all the bad things happening around the world. You are watching those kind of new channels and all bad activity. You are getting all bad news. And after that, your mind, your thought process is not able to think anything positive in life. After that, slowly and gradually after a month, and it's now like 2 years, we are entered into the 2 years of pandemic. So our thought process had changed and we started dreaming wrong things. But it can be changed through mindful practices, yoga and meditation, engaging yourself in fruitful, positive activity, spending time with near and dear ones. It's nothing very serious. It's just your thought process which had changed your dream pattern. The pandemic also changed a lot of lifestyle activities, and many children had problems of sleep. Because parents stayed wide awake till late in the night, and children also didn't have any activities to do. So how do you deal with children who had sleep problems? Yeah, children learn you very nicely. You have mentioned your question, your question that children don't take lectures. They copy whatsoever their parents are doing. So before giving any instructions or suggestions to children, I request proper suggestion I believe that the parents need proper counseling before that, because if they will change their habit, if they will keep the environment in their home happy, they will talk good things, they will play, spend time with their children, they will reduce the screen time. They themselves will not watch those kind of channels very late, like till 9:30, 10, 11. They will watch some good TV or something, and if they switch off their TV by 8 o'clock, after that they can spend time with their kids. Reading activity they can do after dinner, they can do reading activity or some sort of play or game they can play. Then child will sleep nicely and they will feel comfortable that somebody is there. Whatsoever is happening around the world, it's not going to affect us because my parents are there. They have only one thing in their mind, that if my parents are there, nothing can harm me. And so they will sleep comfortably. Dr. Kashyap, my question to you would be, young people who were COVID infected were told not to exert for a period ranging from 3 to 6 months due to the involvement of the lungs and the heart. There were instances of young people unexpectedly dropping dead. You have an armed forces background. How is this issue tackled in the armed forces where physical training is sometimes rigorous? First of all, we must understand that COVID-19 illness, just like any other viral illness, it affects all organs. Some are involved more, which express themselves clinically. So you get diagnosed with COVID pneumonia or COVID myocarditis or COVID thromboembolism. But it's a systemic illness. And also, as first speaker, Dr. Mohit, pointed out, that there could be a low-grade myocarditis resulting in subclinical myocardial dysfunction picked up by specialized tests like echocardiogram. These are the patients who are at risk of exercise-induced, or when they go beyond their effort tolerance, to develop arrhythmias, which they are vulnerable in any case. So a good marker for that is that if somebody recovers from COVID-19 or any other viral illness and suffers from profound fatigue, the definition of fatigue is feeling of being tired after minimal exertion, for which person is used to otherwise. So these are the patients where one should suspect there could be a subclinical myocarditis, which makes them vulnerable to all kinds of problems, including sudden death on exertion. So these are the patients who should be investigated in a targeted manner
And if there are signs and symptoms of myocarditis, they should be given prolonged rest. And there are some medicines also, which I will not go into detail here, but they can be put on some medicines also to make them recover, particularly those who are found to have impaired heart function. Here, because the context has come up, I would like to say that we must investigate and counsel patients in a targeted manner, because one of the hazards in any pandemic, and more so in the current pandemic, is that one should not overwhelm medical and healthcare systems, because positivity rate in some of our metropolitan cities is 25%, going up to 50%. If we were to advise all of them to undergo complete cardiac checkup, complete lung checkup, and other investigations, the medical system and the healthcare system will get overwhelmed. So it should be done in a targeted manner. Those patients who have profound fatigue or sequelae after initial illness should be investigated. All others can follow routine healthful activities like good nutrition, remaining well hydrated, etc. You earlier worked as the general manager of one of the leading gymnasiums, the Tavarkas. Jim was in the news with the unfortunate death of Sandalwood actor Puneeth Rajkumar. So much so that some states are proposing the mandatory presence of cardiologists and wellness experts at gyms. What are the precautions that COVID recovered people should take before hitting the gym? What kind of precautions they should take? The first and foremost thing that I would advise them is to take approval from their cardiologist or from their doctor. In case first they have to check their blood pressure, sugar, all the other parameters should be under check before they hit the gym. Secondly, if you are hitting a gym, it is very, very important that you're guided by a qualified nutritionist and a fitness trainer. As I said, most of the time, these trainers or dietitians, if they are, especially the trainers, if they are not qualified enough, and if they are giving, a lot of time it is seen that they have been giving a lot of diet advice to their patients or to their clients, which should be avoided. And once you have recovered, it is important that you get your heart rate checked, your blood pressure checked, and your diet should be a properly disciplined diet. Once you feel there is no fatigue, you're not getting tired, only then you should think of going back to the gym. Otherwise, I would advocate start with a very, very slow-paced exercises. We often hear that people say that their heart is an open book. Well, now it's literally so. Keeping tabs on your health with apps that track your heart rate, blood pressure, fitness, endurance can reveal a lot about your heart and efficacy of medication, lifestyle adjustments, and other treatments. These tools are trusted favorites of researchers and cardiologists. What are the advantages and disadvantages of having this app, especially in times of COVID, where everything becomes an open book? It's actually a very, it's a great invention, I feel. It's something that can make your life really easy, but at the same time, it can also make your life really miserable. Depends on how you look at it. Because we've had patients who have their pulse oximeter plugged in 24 hours, and then if they have access to your phone number, then best of luck. Because you will get a call every hour saying, "Doctor, my heart rate is 65. Now it is 95. Then it became this. And if you have a sleep tracker or a fitness tracker, they'll call you up saying that my heart rate became 40 during my sleep. So, see, these things are normal. See, in science, nothing is absolute. We hear that the normal heart rate in schools you are taught is 72 beats per minute. That is not so. It is 60 to 100 beats per minute. It's always a range. Okay, your normal might be different from my normal. So each of us has a range, a physiological range, so to speak. Now, another problem that comes in with these pulse oximeters is that sometimes, especially in COVID, we've seen a lot of people developing something called extra beats or ectopic beats. So these are very often benign. There's nothing to worry about. So what happens is sometimes these extra beats come 1 and 2 beats. So if your heart rate is 70, it will be 35 normal beats and 35 ectopic beats. So when you put in the pulse oximeter, many of these pulse oximeters are not sensitive enough. So they pick up only the normal beats, and it will show you your heart rate as 35. And the patient gets alarmed and runs to the hospital where they take an ECG and they say that ECG is abnormal. So it causes stress. So this is the downside of it. The good side of it is you can monitor your heart rate. Somebody who is at rest and finds his heart rate has gone up to 150. That is an alarm.
So especially, elderly people who have episodes of giddiness, elderly people who have unexplained strokes, especially these watches that can detect the medical condition known as atrial fibrillation have come as a blessing for us. Because many times patients land up with recurrent strokes and you're not able to find anything in the hospital evaluation. So we actually recommend people like this to get a watch that has a AF detection technology on it, which even captures the ECG as well during that time. So if they find that their heart rate has shot up all of a sudden and it's irregular, they just need to record their ECG and they can transmit that to us via, the app or as a PDF. And there, if you catch the AF, there you can start them off on anticoagulation, which you would not be having evidence to do so otherwise in the absence of this. So there is a definite benefit to it, but then everything needs to be taken with its, in a pinch of salt. You can't just say that, this is without any flaws or that is without any benefit. So there are pros and cons, and I think with prudent use, technology will definitely help us, and that is the way going forward. I think patient education really helps here, rather than, just, as I told you, they keep calling you and telling you. I mean, instead of me telling them that, "Arey, kuch nahi hai yaar, don't trouble me," if I just take time out 2 minutes to tell them that, "Why, don't worry, see, your normal heart rate has a range, it's 60 to 100. Anything between this is fine. Inform me if it is less than 60 or more than 100. They are happy, they understand. He'll tell somebody of his own also the same thing. So I think we have moved beyond the era where we tell patients, you want to listen to the internet, you go take treatment from there, to coming up and telling patients actually, at least what I do is I tell them, this is your disease. You have a lot of information available online. You have videos on YouTube. You have literature available on Google. You go, you Google it, you look at it, you come back with your doubts. Because I am happier if they come back to me with their doubts and I can clarify them, rather than they receive a WhatsApp forward from somebody and they end up believing that and stop the medication. Welcome back. I want to remind our viewers that we are live on Facebook and YouTube. We now have a short capsule Healthnama, which has been recorded earlier on key health issues discussed by top experts. The topic this time is COVID conundrum. Over to Healthnama. नमस्कार, एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं हेल्थनामा के नए एपिसोड के साथ। कोविड का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पेंडेमिक अब एंडेमिक की ओर बढ़ रहा है। कई तो ये भी मानते हैं कि कोविड की चौथी लहर की संभावना बिल्कुल कम है। भले ही कोरोना का डर खत्म हो गया हो, पर वैक्सीन पर बहस कम नहीं हुई है। इसके औचित्य पर लगातार चर्चाएं होती है। अब तो ये चर्चा भी हो रही है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाए। हमने इसी मुद्दे पर कई विशेषज्ञों से बात की। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। क्या कोई स्टडी हुई है इस बारे में कि सीवियरिटी से इसकी वजह से कम हुई? क्योंकि हमने देखा है कि डबल डोज लेने वाले की भी मौत हुई है, वो भी ऑक्सीजन पे गए हैं। ऐसे कई केसेस आए हैं, कम हुए होंगे लेकिन ऐसे केसेस आए हैं। तो क्या कोई स्टडी हुई है कि वैसे भी आपने जैसे बताया कि ओमिक्रॉन वैसे ही कमजोर वेरिएंट हुआ है, तो उसकी वजह से भी, तो क्या सीवियरिटी कम हुई है वैक्सीन की वजह से? इसकी कोई स्टडी हुई है? देखिए, इसकी स्टडीज दुनिया भर में हुई हैं। हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा देश है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी हमने इतनी अच्छी तरह से इसको कंट्रोल करा। जो डेवलप्ड नेशंस हैं, यूरोपियन नेशंस हैं, अमेरिकन नेशंस हैं, उनमें इतनी अच्छी स्टडी हुई है कि जब ये दोबारा से ये वापस आया कोविड डेल्टा में,
तो उसके बाद ये देखा गया कि जो आईसीयू में मरीज जाते थे वो 90% वो होते थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। 90% वो होते थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, कोमॉर्बिड कंडीशन है। जब वैक्सीन नहीं आई थी सब लोग आईसीयू में जा रहे थे, लेकिन उसमें मौत किसी को हो रही थी, किसी को नहीं हो रही थी। तो अब अगर आप देखेंगे उसके बाद कि आपको 90% प्रोटेक्शन आई है आईसीयू जाने से या वेंटिलेटर पे जाने से, तो उसमें अगर 10% बच जाते हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है, तो उसको आप लेके ये नहीं कह सकते देखो फला 10 में से जो है 10 में से एक व्यक्ति की तो डेथ हो गई। अरे भाई 9 को बचाया भी तो है ना। और उसके ऊपर जो रिसर्च अभी और नई आई है उसमें ये भी आया है, क्योंकि ये बहरूपिया है, ये जो वायरस है कोविड का, इसमें अगर आपकी वैक्सीन पूरी लगती है तो जो पुरानी वैक्सीन लगाते हैं आप, उसके बाद बूस्टर डोज लगाते हैं या उसके बाद प्रिकॉशनरी डोज लगाते हैं, तो आपका जो दायरा है प्रोटेक्शन का, एक तो वो लंबा हो जाता है, 3 महीने से बढ़ के 8 महीने हो जाएगा, और दूसरा उसका दायरा सिर्फ लंबाई में नहीं बढ़ता है, उसका दौरा चौड़ाई में ही बढ़ता है। चौड़ाई का मतलब है कि जो म्यूटेशंस नई आने वाली हैं या आ चुकी हैं उनसे भी बचाव देता है। कि जो यंगर जनरेशन है उनमें एडल्ट की अपेक्षा विटामिन डी डेफिशिएंसी 4 गुना ज़्यादा है, बहुतों में, ज़्यादातर केसेस में। क्या ये डेफिशिएंसी बच्चों को वायरस प्रोन बनाती है? किशोर जी, ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, बट बिल्कुल ये तो है ही। अब ये तो हम सबको ही पता चल गया है, और जैसे कि बोला है कि आजकल सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है कि सबको पता है कि हमें अगर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक लेना है। तो विटामिन डी जो होता है वो लंग प्रिवेंशन में हेल्प करता है, ना सिर्फ कोविड की बीमारी में, अदरवाइज ऑल्सो निमोनिया के केसेस में और लंग डिजीजेस में भी विटामिन डी प्रिवेंट करता है। जब हम छोटे बच्चों में डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मली उन बच्चों में बात करते हैं ये जो बच्चे मदर या ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों के अंदर विटामिन डी का जो लेवल्स होता है वो माँ के विटामिन डी के लेवल पे डिपेंड करता है। और नॉर्मली देखा गया है कि ना तो हम धूप में जाते हैं, हम लोग के अमाउंट ऑफ विटामिन डी इवन इन एडल्ट्स आर लेस। तो इसलिए बिकॉज ऑफ मदर और स्पेशली जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं उनको सजेस्ट किया जाता है, आजकल तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम एटलीस्ट 1 साल तक सारे बच्चों को, चाहे वो कहीं भी बॉर्न हो, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में, 1 साल तक बच्चों को विटामिन डी की 400 इंटरनेशनल यूनिट की डोज रोज दी जाती है। एंड उसका कारण ही यही है क्योंकि हम नहीं पता कर सकते हैं कि छोटे बच्चों में कितना विटामिन डी लेवल्स है, और ये विटामिन डी लेवल्स जो होता है ये माँ के विटामिन डी लेवल्स पे डिपेंड करता है। कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी और बहुत हल्के ढंग से इन्फेक्शन के बाद रिकवर होने के बाद भी कई वीक बाद भी कोई ना कोई ऑर्गन प्रभावित हुआ है, और यहाँ तक देखा गया कि 13 वीक के बाद हार्ट डैमेज हुआ है, ऐसे कुछ केसेस आए हैं। तो इसकी कितनी संभावना है और क्यों है? कि लॉन्ग कोविड जिसे हम कह रहे हैं और ऑर्गन डैमेज जो है, इसकी संभावना है, डेफिनेटली है। और सेकेंड वेव में जो डेल्टा था उसके साथ बहुत ज़्यादा हुई। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट स्टडीज़ में डिफरेंट आए हैं, कितने लोगों को लॉन्ग कोविड हुआ है, स्टडीज स्टिल ऑन है, WHO की यूनिटी प्रोटोकॉल्स भी इस पे चली हैं। और ये संभावना तो रहती है क्योंकि ये मल्टी ऑर्गन डैमेज कर रहा है। इसका जैसे पैनक्रियास पे भी पता लगा है, तो डायबिटीज़ जो हो रही है वो काफ़ी लोगों को हुई है, स्टेरॉइड्स देने के बाद हुई है। हार्ट का जो इफेक्ट है वो भी अब काफ़ी पता लगा है कि हो रहा है। अब ये जो मल्टी ऑर्गन डैमेज है ये तो इसका एक नेचर है, और ये इवॉल्विंग डिजीज़ है, इसलिए एग्जैक्टली स्पेसिफिकली किसी ने शायद पता नहीं लगाया है अभी तक कि कौन सा डैमेज ऑर्गन होगा। अभी भी स्टडीज आर ऑन, कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके साथ डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे एल्डरली एज ग्रुप है या यंगस्टर्स में भी हैं, तो वो जेनेटिक फैक्टर्स भी पता लगाए जा रहे हैं, ब्लड ग्रुप के टाइप के साथ भी कई सारे फैक्टर्स पता लगाए गए हैं। लेकिन ऑर्गन डैमेज एक पॉसिबिलिटी है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। कोविड के ठीक होने के बाद भी ये हो रही है, ये भी एक सही बात है। इसीलिए कोविड इतनी खतरनाक बीमारी है, और क्योंकि इवॉल्विंग डिजीज है इसलिए पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। जैसे हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज कहते हैं, जब कोई बीमारी होती है और वो अपने नेचुरल कोर्स में चलती है बिना किसी दवा दिए, बिना किसी इंटरवेंशन के, उसे नेचुरल हिस्ट्री कहते हैं। फर्स्ट वेव में हमने काफ़ी इसकी नेचुरल हिस्ट्री देखी है, तो उसमें इसकी एक का कॉम्पोनेंट ही है कि ये
सिर्फ सही होने के बाद, सिम्टम्स हटने के बाद ये नहीं हम सोच सकते कि ये ठीक हो गया। हमें फॉलो अप फिर भी करना है पेशेंट्स का, क्योंकि ये मल्टी ऑर्गन डैमेज पॉसिबल है इसमें। 2 महीने पहले यानी 21 दिसंबर 2021 को नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने सरकार को सुझाव दिया था कि बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है, और इस रिपोर्ट के ठीक 3 दिन बाद सरकार ने घोषणा कर दी कि 12 से 15 साल के बच्चों को, 15 साल तक के बच्चों को ये दिया जाए। अब ये चर्चा हो रही है कि 15 साल से नीचे के बच्चों को भी, 12 से 15 के बीच के बच्चों को भी वैक्सीन दिया जाए। आपकी क्या राय है? ये बहुत ही एप्ट क्वेश्चन है। सो एक्चुअली होता क्या है कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि बच्चों में कोविड क्यों नहीं हुआ आपकी बार। जैसे सेकेंड वेव के अंदर बड़ों में इतना कोविड था और उसी घर में बच्चे रह रहे थे और बहुत ही कम बच्चे जो थे वो सिक हुए। जो बच्चे बहुत सिक हुए वो या तो क्रोनिक एस्थमा से पीड़ित थे, या वो बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रेस थे, या देवर ऑन स्टेरॉइड्स, या उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था। अदरवाइज इन जनरल यही देखा गया था कि नहीं, बच्चों में ज्यादा नहीं होता। तो इसका रीजन क्या था? इसका वन ऑफ द रीजंस, देयर आर मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे रीजंस है। एक है कि बच्चों के नोज में वो रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते जो कि कोविड को ट्रांसमिट करते हैं। दूसरा रीजन, जो बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि 5 साल तक बच्चे बहुत तरह की वैक्सीन रिसीव कर रहे होते हैं। जो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल शेड्यूल है उसके अंदर बच्चे लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन सब ले रहे होते हैं, जो कि धीरे धीरे कम होता जाता है। तो 5 साल से 18 साल के बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं कोविड से, और इसी वजह से इन जर्नल एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि बच्चे बहुत इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं, या अगर इन्फेक्ट हो भी रहे हैं तो एसिम्प्टोमेटिक है, या फिर दे आर माइल्ड सिम्टम्स जो कि अपने आप ठीक हो रहे हैं। बट ये देखा गया है कि नाउ ये जैसे जैसे वायरस म्यूटेट हो रहा है, ये माइल्ड बन रहा है, पर ये बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। और क्योंकि इसका ये कंटेजियस ज्यादा हो रहा है, इसका स्प्रेड ज्यादा हो रहा है, तो इन केस में ये एडवाइस किया जा रहा है कि हम बच्चों को भी वैक्सीन देना शुरू करें। बिकॉज ये देखा गया है कि जो पहले वैक्सीन थी, नॉन कोविड वैक्सीन की बात हो रही है, जो पहले वैक्सीन हुई, जैसे MMR वैक्सीन रिसीव करी है, हेपेटाइटिस ए रिसीव करी है, इन्फ्लुएंजा, इवन वो भी इनडायरेक्टली बच्चों को कोविड की इन्फेक्टिविटी को कम करने में हेल्प कर रही है। तो यहाँ तो हम कोविड वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए 15 साल से ज्यादा बच्चों के लिए अभी, बिकॉज टेस्टिंग चल रही है 15 साल से कम बच्चों में, तो वो हमें बता दिया गया है कि अब 15 साल से बड़े बच्चों में वैक्सीन देनी है। अमेरिका में कोई रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार वो कोई स्टडी अभी तक नहीं हुई जो ये बता सके कि मास्क वायरस प्रिवेंट करता है, और ये बाजार के दबाव में सिर्फ मास्क को एक होली थिंग बना दिया गया। कितनी सच्चाई इसमें? साइंटिफिक स्टडीज को पहले, जैसे मैंने आई थिंक लास्ट टाइम भी बोला था, पहले सिर्फ साइंटिस्ट पढ़ा करते थे, लेकिन इस पैंडेमिक ने हर किसी को एपिडेमियोलॉजिस्ट बना दिया, चाहे वो कोई भी स्पेशलिस्ट हो मेडिसिन का, और कोई भी जो अपना जर्नलिस्ट हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, सभी एपिडेमियोलॉजिस्ट बन गए, क्योंकि वो सारी साइंटिफिक स्टडीज पब्लिक डोमेन में आ गई। अब देखिए, साइंटिफिक स्टडी जब होती है तो उसका निष्कर्ष इस तरह से नहीं निकलता कि मुझे आज एक चीज पता लगी तो मैं कह दूं ये गॉस्पेल ट्रूथ है। काफी सारी स्टडीज की जाती हैं, और उसके बाद एक मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यूज, मेटा एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, उन स्टडीज को देखा जाता है और फिर कुछ निष्कर्ष निकलता है जिसमें समय लग जाता है। ये बीमारी अभी 2 साल पुरानी है। एक स्टडी आई थी पहले जिसमें मास्क का कोई यूज नहीं है, ये भी निकला था, ये भी प्रूव कर दिया गया था कि मास्क इनफैक्ट कोई फायदा देता ही नहीं है। ये यूएस की ही स्टडी थी। कुछ स्टडीज ऐसी थी जिनमें ये पता लगा कि मास्क का फायदा है। आपको हर स्टडी में बहुत क्रिटिकली रिव्यू करना पड़ता है, और जब ये सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस किए जाते हैं तो उनमें स्ट्रेंथ देखी जाती है, आरसीटीज को सबसे ऊपर रखा जाता है, और फिर उसका पता लगाया जाता है कि ये कौन सी हम क्या इसका वो निकाले कंक्लूजन, जिसे जनरल पब्लिक तक भी पहुंचाया जाए, और जिसे अब हम ऐसा मानते हैं और फिर टेक्स्ट बुक्स में आ जाती है वो चीज़। लेकिन एक 2 साल पुरानी बीमारी में एकदम से ये कह देना कि एक साइंटिफिक स्टडी ये कह रही है तो आप इसे मान लीजिए, ये सही नहीं होगा। क्या मास वैक्सीनेशन म्यूटेशन का चांस बढ़ाता है? ये एक बहुत बड़ा कॉन्ड्रम है जिसे आप पिक कर रहे हैं।
मास वैक्सीनेशन से जो आर्टिकल्स इस पे पब्लिश हुए उनको कुछ मिस इंटरप्रेट किया गया है। म्यूटेशन का, जैसे अभी डॉक्टर नरेश गुप्ता ने समझाया कि म्यूटेशन आरएनए वायरस में होता ही है, और जितना ये ज़्यादा रहेगा शरीर में उतने ही म्यूटेशंस के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल है तो उसमें ये चांसेस ज़्यादा होंगे, और मास वैक्सीनेशन से म्यूटेशन बढ़ने का चांस इस तरह से हो सकता है कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वो इन्फेक्ट होंगे, उनके अंदर ज़्यादा दिन तक वायरस जब सर्वाइव करेगा, जितना ज़्यादा सर्वाइव करेगा, जो रेट बता रहे थे डॉक्टर साहब, तो हर 15 दिन में अगर म्यूटेट करेगा तो स्पेशली जो अनवैक्सीनेटेड और ऐसा वाला है जिसे कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ है, तो उसमें ये म्यूटेशंस ज़्यादा होंगी, और इसलिए जो नए नए वेरिएंट्स हैं वो इमर्ज करेंगे। तो मास वैक्सीनेशन हम 100% तो कर नहीं पा रहे हैं ना, तो मास वैक्सीनेशन से ये एसोसिएटेड हो गई बात, जिसे हम स्पूरियस एसोसिएशन कह सकते हैं, कि म्यूटेंट्स की इमर्जेंस, और स्पेशली एक और भी चीज़ है इसमें कि जो वैक्सीनेटेड होता है उसके अंदर भी इन्फेक्शन से तो बचाव नहीं करती ना वैक्सीन, तो इन्फेक्शन होगा उसमें, और इन्फेक्शन होगा तो उसमें भी एक चांस है म्यूटेंट के इमर्ज होने का। लेकिन जो अगर हम मास वैक्सीनेशन बहुत हाई उसकी लेवल की कर देते हैं तो म्यूटेंट्स भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो आज के हेल्थनामा में इतना ही। सेहत के बारे में विस्तार से जानने समझने के लिए आप हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम हेल्थ फॉर ऑल से जुड़ सकते हैं, हर रविवार सुबह 8 बजे से 11 बजे तक YouTube और Facebook पर लाइव। हेल्थनामा और हेल्थ फॉर ऑल के सभी एपिसोड्स देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल हील टीवी को सब्सक्राइब करें और सेहत के प्रति जागरूक बने। धन्यवाद, नमस्कार।
Welcome back. We now move on to another important session, session number 2. But before that, let me remind our viewers that we are live on Facebook and YouTube. So this session, which lasts for an hour, is another important session which deals with all you need to know about chronic pain prevention, treatment, and management. We have top experts to discuss this topic, including Dr. Mithilesh Kumar, Dr. Anurag Agarwal, Amod Manocha, and Dr. Puja Pandey. Dr. Mithilesh Kumar is an advanced pain management specialist and palliative care expert at Sir Gangaram Hospital, New Delhi. He has an experience of more than 14 years in this field with super specialization in pain and palliative care. His expertise lies in advanced non-surgical evidence-based management of back pain, headache, knee pain, shoulder pain, musculoskeletal pain, cancer pain, and other kinds of chronic pain and palliative care. Dr. Anurag Agarwal is head of Pain and Palliative Care Department, Fortis Hospital, Noida, and head of Emergency Medicine Department. He is a trained and certified pain and spine specialist with more than 14 years of clinical experience. Having pursued his fellowship in pain medicine in Germany and UK, he was also a resident fellow of the American Society of Interventional Pain Physicians. Dr. Amod Manocha is head pain management services at Max Super Specialty Hospital, Saket. He's trained as a pain management specialist and an anesthetist in the UK. He has over 13 years of work experience in the UK, including working as chronic pain consultants in many UK hospitals. We also have with us Dr. Puja Pandey, a physiotherapist and also a certified yoga teacher, an expert in aerobics and Zumba. She runs Arogya Physiotherapy, combining all these techniques for better living. She is a creative spirit behind her successful YouTube channel called Arogya Physio Tips. Welcome all the experts and the doctors on the show. I now hand over to Kishore Malviya for his round of questions. Thank you, sir. इससे पहले कि हम इस शो को आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें, हम आपको बता दें कि हमारा ये शो YouTube और Facebook पर दुनिया भर में लाइव देखा जा रहा है और उससे भी बड़ी बात ये है कि दर्शकों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और दर्शक काफ़ी सवाल भी पूछना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल डॉक्टर मिथिलेश कुमार से। डॉक्टर साहब, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पेन कब और कैसे क्रोनिक बन जाता है? मैं उस पेन की बात कर रहा हूं जो किसी इंजरी से रिलेटेड नहीं है। कब और कैसे ये क्रोनिक बन जाता है और क्या इस तरह के पेन का कोई प्रिवेंशन है? सर सबसे पहले जो भी आपके द्वारा इसको सुन रहे हैं उसका उन सबका हार्दिक अभिनंदन। पेन क्रोनिक बनने के बहुत सारे रीजन होते हैं और हम उनको रोक भी सकते हैं। ये कोई एक दिन में नहीं बन जाता। मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी जॉइंट का हमें गलत इस्तेमाल करना, ज्यादा इस्तेमाल करना, सर्जरी के बाद एक्यूट पेन का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पाना, खान पान में ठीक से ध्यान नहीं रखना, अपना वजन कंट्रोल नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब कुछ रीजंस होते हैं जो कि एक्यूट पेन को क्रॉनिक पेन में बदलते हैं। और अगर हमें जिस समय किसी भी शरीर के हिस्से में, चाहे वो घुटने का हो, बैक का हो, हमें जल्द से जल्द एक पेन स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज सिर्फ दवाओं से, सर्जरी से या किसी इंटरवेंशन से नहीं होता। हमें एक थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना होता है, थोड़ा सा वेट मॉडिफिकेशन और थोड़े बहुत दर्द की दवाइयों की जरूरत पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सक्सेसफुल होते हैं। डॉक्टर साहब, हर आदमी इंस्टेंट रिलीफ के लिए पेन किलर ले लेता है। डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती है उनको, वो डॉक्टर गूगल से सलाह ले लेते हैं और पेन किलर खरीद लेते हैं।
पेन मैनेजमेंट के साइड इफेक्ट क्या हैं? क्या बार बार हम पेन को दबाने के लिए पेन किलर लेते रहें अपनी मर्जी से? वो भी क्रोनिक हो सकता है, उससे भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं। हमारे यहाँ इंडिया में वी आर लकी कि हमें मेडिकल हेल्प जल्दी मिल जाती है, ईज़िली अवेलेबल है। बाहर में जैसे डॉक्टर मनोजा आए हैं यूके से, वहाँ पे स्पेशलिस्ट के पास पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। इंडिया में अब इसके फ़ायदे ये हैं कि अभी मुझे दर्द हुआ, अब दर्द से बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70-80% लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाते ही किसी न किसी फॉर्म के दर्द के लिए। वैसे में दर्द के लिए लाइन लगना, अपना नंबर आना, कुछ बड़े इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे अगर आप इलेक्टिव किसी चीज़ के लिए जा रहे हो तो बहुत समय बाद आपका नंबर आता है। वैसे में ओवर द काउंटर ड्रग्स जो भी हैं पेन रिलीफ के अगर हमें मिल जाते हैं, इट्स वेस्ट उस पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, उस इंसान के लिए बहुत अच्छा है। बट हाँ, ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो किसी न किसी रूप में आपको नुकसान भी पहुँचाती है अगर वो फ़ायदा कर रही हैं। अब उसके लिए कि कितनी दवाई लेनी है, कितने दिन तक लेनी है, क्या आपके इस दर्द के लिए ये दवाई उचित है? क्या आपको पहले से जो भी बीमारियाँ हैं, बीपी, शुगर, थायरॉइड, किडनी की, उसमें ये दवाई ले सकते हैं? ये चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है, बहुत हद तक अवेलेबल है, बट एक एक्सपर्ट आपका पूरा प्रोफाइल देख कर के आपको जो दवाई बताएगा और वो आपको जितना फ़ायदा करेगा और नुकसान से बचाएगा, उसका कोई बराबरी नहीं है क्योंकि वो इस चीज़ एक दवाई को लिखने के लिए अपनी ज़िंदगी का 15 साल लगा रहा है और आपकी दर्द को वो अच्छे से समझ सकता है, आपके शरीर को अच्छे से समझ सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे अगले सवाल का 2 पार्ट है, 2 हिस्से हैं। अच्छा। एक तो ये है कि जो दर्द है, चाहे वो सिर दर्द हो या बदन दर्द हो, ये लगभग एक तरह के होते हैं और कई बार ऐसे भी होते हैं कि अभी दर्द है और 1 घंटे के बाद अपने आप खत्म हो गया। कल फिर हुआ, फिर खत्म हो गया। तो पहली बात तो ये कि अलग-अलग तरह के दर्द को कैसे अंतर करे आम आदमी, और दूसरा वो कौन-सा समय है कि पेशेंट ये समझे कि नहीं अब वक़्त है डॉक्टर को कंसल्ट करने का? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी दर्द, जैसे हम दिन में काम करते हैं बेस्ड ऑन हमारा वर्क प्रोफाइल, जैसे हमारा बैठने का ज़्यादा काम है, चलने का ज़्यादा काम है, झुक के काम करने का ज़्यादा है, पीठ पे ज़्यादा वज़न उठा रहे हैं, उस हिसाब से उस हिस्से का पेन जनरेटर हम ढूँढते हैं कि दर्द कहाँ से आ रहा है। अभी अगर कोई भी दर्द आपको दिन में अपना नॉर्मल काम करने नहीं दे रहा, आपको सोने नहीं दे रहा, आप उसके बारे में हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको हफ्ते में 2 बार उसके लिए दवाई लेनी पड़ रही है, या उसकी वजह से आपको और प्रॉब्लम हो रही है, आपको अपना जॉब प्रोफाइल चेंज करना पड़ रहा है, आप घर में चिड़चिड़े रह रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो अगर दर्द के साथ दर्द का हम एक मापने का हमारे पास स्केल होता है जो कि जो भी पेशेंट है वो खुद डिसाइड करता है। कोई भी इंसान अगर बोल रहा है कि उसको दर्द है तो हम मान के चलते हैं कि ये दर्द है, और उसको मापने का जो भी स्केल है, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल या विजुअल एनालॉग स्केल, वो पेशेंट पे ही डिपेंडेंट होता है, वही बताता है कि हमारा दर्द कितना है। तो अगर उसमें दर्द 1 से 10 रुपए के स्केल पे दर्द को नापते हैं, 1 रुपए मतलब कोई दर्द नहीं और 10 रुपए मतलब जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा दर्द हमने फ़ील किया, हड्डी टूटने का, प्रसव का दर्द। अगर उसमें पेशेंट का पेन 3 से नीचे है, तो वो हमारा दिनचर्या क्या है, हम आराम कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। 3 से 4 से 6 का है, तो उसके लिए हमें कोई माइल्ड एनाल्जेसिक, कोई हल्की दवाइयाँ देनी पड़ेंगी जिससे उनका काम चलता रहे। अगर दर्द का स्कोर 7 और या 7 से ऊपर है, तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि वो इंसान अपना नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा। तो कोई भी दर्द जो आपको रोज़ तंग कर रहा है, आपकी नॉर्मल दिनचर्या नहीं करने दे रहा, या आपके दिमाग में हर समय बना हुआ, जैसे हम पेन डायरी मेंटेन कराते हैं हर मरीज़ से कि आप उसको लिखो कि आपको कितना ये तंग कर रहा है, और बेस्ड ऑन दैट प्रोफाइल आप आइए और जो भी आपके नज़दीक में है, पेन को जितना जल्दी हम स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेंगे, उसको ठीक करना उतना आसान होएगा।
थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। अगले राउंड में फिर हम आपके पास लौटेंगे कुछ और बिल्कुल नए सर। सवालों Thank you. के साथ। Thank you. डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, ज्यादातर लोग पेन क्लिनिक के बारे में नहीं जानते, क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे कि ये पेन क्लिनिक है क्या, कैसे फंक्शन करता है, और दूसरा कब और किसे पेन क्लिनिक जाना चाहिए? नमस्कार सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पेन क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिका में काफ़ी सालों से प्रचलित था। ऑलमोस्ट अब 70 साल के करीब हो गए होंगे। इंडिया में पेन क्लिनिक्स अराउंड 20 से 25 साल पहले स्टार्ट हुए। और पेन क्लिनिक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर प्रकार के दर्द का संपूर्ण इलाज मिल सकता है, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो जॉइंट पेन्स हो, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो नसों का दर्द हो, जिसके लिए हमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। तो पेन क्लिनिक का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपको दर्द की दवाइयाँ देनी है और आपका दर्द वो शांत कर देंगे। हमारा मेन मकसद होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि पेन किस वजह से हो रहा है और उस जड़ को हम पहचानें, उस जड़ पे काम करें। लेकिन जब तक वो आपकी जो परेशानी है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होती, तब तक हम आपको कुछ ऐसी दवा दें ताकि आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छे से चलती रहे और आपको उसमें परेशानी ना हो, आपकी नींद वगैरह ठीक रहे। और इसके अलावा पेन क्लिनिक का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरवेंशंस। जो मरीज़ दर्द की दवाइयाँ से नहीं जिनको फ़ायदा हो रहा है, उनके अंदर पेन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, ट्रेन्ड होते हैं पेन जनरेटर्स को टारगेट करने के लिए और कुछ इंटरवेंशंस करने के लिए, जिसके अंदर हम कुछ नसों को टारगेट करते हैं, जिनको हम ब्लॉक कर सकते हैं, जिनको हम बर्न कर सकते हैं। तो उससे उस हिस्से का दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है और दर्द की जो दवाइयाँ हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और एक और चीज़ है कि जो पेन किलर्स होते हैं ना, एक बहुत अमूमन एक धारणा रहती है कि पेन किलर्स तो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं और इससे हमारी किडनी खराब हो सकती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेन जो किलर्स होती हैं, ये बहुत प्रकार की होती हैं। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी दवाएँ हैं, जो कि आपके किडनी, लीवर, हार्ट किसी भी अंग को खराब नहीं करती। तो जो मरीज़ क्रॉनिक पेन के होते हैं, उनके लिए मेडिसिन्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एक्यूट पेन से। उनको अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि पेशेंट को किस टाइप का दर्द है, वो नोसिसेप्टिव पेन है, न्यूरोपैथिक पेन है, सेंट्रल पेन है, मिक्स्ड पेन है, तो उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको उसी प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, ताकि अगर कोई दर्द हमारा एक बीमारी बन चुका है, क्रॉनिक पेन एक बीमारी है, अगर वो एक बीमारी बन चुका है तो उसको जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाइयाँ चलती हैं, उसी प्रकार से हमें कुछ दवा देनी पड़ेगी, ताकि वो दर्द उसके शरीर को खराब ना करे और पेन उसके दिनचर्या को अफ़ेक्ट ना करे। तो पेन क्लिनिक एक संपूर्ण प्लेस है, क्योंकि बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, जिनको सर दर्द होता है, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। किसी को कमर का दर्द होता है, तो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं। घुटने का दर्द होता है, तो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं। फिर उसके बाद उनको कहीं छाती में दर्द है, तो ढूँढते हैं कि फिजिशियन के पास। तो पेन क्लिनिक में आपको एक ही जगह पे सारे दर्द का इलाज मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो डिफरेंट जगह पे आपको पेन हो रहे हो, वो सारे लिंक्ड हो। तो इसके लिए पेन स्पेशलिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है आपके बीमारी को ढूँढने के लिए, उसकी जड़ से उसको खत्म करने के लिए। और अगर दर्द की दवाइयाँ काम ना आ रही हों या नहीं रिलीफ मिल रहा हो, तो इंटरवेंशंस करने के लिए जो हमारे अलावा कोई भी अदर स्पेशलिटी नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत बड़े मिथ को तोड़ा कि हर पेन किलर जो है वो शरीर के किसी अंग को खराब कर देता है। ये मिथ को आपने आज तोड़ा है। सिर दर्द की भी आपने बात की। सिर दर्द हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, और ये भी कॉमन है कि हर सिर दर्द को लोग माइग्रेन से जोड़कर देखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या माइग्रेन के लिए मेडिकेशन परमानेंट सॉल्यूशन है मेडिकेशन से, या ये लाइफस्टाइल से ही क्योर हो सकता है? सर दर्द को हम अगर बात करते हैं, सर दर्द मेरे क्लिनिक में 30% पेशेंट सर दर्द के होते हैं। अगर मैं महीने में 500 मरीज देखता हूँ, तो 30% मरीज सर दर्द के होंगे। सर दर्द को पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि वो प्राइमरी हेडेक है या सेकेंडरी हेडेक है। प्राइमरी हेडेक का मतलब होता है कि जिसके अंदर अगर मैं पेशेंट का ब्रेन या सीटी स्कैन कराऊं, वो बिल्कुल नॉर्मल निकले। ओके, सेकेंडरी हेडेक होता है जिसके अंदर आपको या तो कोई ट्यूमर है, या इन्फेक्शन है, या कोई वेसल की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसे दर्द उसमें सीटी स्कैन या एमआरआई में कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स निकलती हैं। इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी हेडेक। अब अमूमन पेन क्लिनिक्स पे हम पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे जज कर पाते हैं कि ये प्राइमरी हेडेक है या सेकेंडरी हेडेक है।
अब अगर हम बात करते प्राइमरी हेडेक की, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, उसके अंदर 3 प्रकार के दर्द आते हैं, टेंशन हेडेक, माइग्रेन, और एक होता है ब्रॉड टर्म जिसको हम बोलते हैं टैक्स, जिसके अंदर सबसे कॉमनेस्ट है क्लस्टर हेडेक। तो अगर ये 3 प्रकार के दर्द को हमने आइडेंटिफाई किया, इसके अंदर अगर मरीज को दर्द कभी कभार होता है, जैसे महीने में 1 बार या 2 बार, तब तो हम उसको एबॉर्टिव मेडिसिन देते हैं। एबॉर्टिव का मतलब कि वो दवाई ली और वो बंद हो गया। लेकिन अगर वो सर का दर्द उनको रेगुलरिटी में अफेक्ट कर रहा है, मोर देन 4-5 बार हो रहा है महीने में, या उनके काफी दिन खराब हो रहे हैं, 8 दिन 10 दिन खराब हो रहे हैं उस दर्द से, तो हमें कुछ ऐसी दवाइयां देनी होती है जो नसों पे काम करे, ताकि उस दर्द के होने की संभावना कम हो जाए। ओके, और उससे हमारे को वो सर दर्द की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी और उससे हमारे शरीर को नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज जो आपने बोली कि जो माइग्रेन है वो क्या उसका गोलियां इलाज है, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन जो है वो ब्रेन हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है। कुछ ट्रिगर्स होते हैं जब दिमाग के सामने आते हैं, तो उससे हमारा माइग्रेन जो है वो एकदम से बन जाता है, एकदम सरदर्द बन जाता है। वो ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है कि चेंज ऑफ सीजन है, या फिर आपका तेज धूप, तेज लाइट, तेज आवाज, कोई तेज स्मेल, आपका नींद का ठीक से पूरा नहीं होना, आप उल्टे सीधे समय पे खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, फास्ट फूड खाते हैं, तो बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं। मेंसेस के टाइम पे हो सकता है। तो हमें पहली बात तो ये है कि माइग्रेन को अगर हमें कम करना है या समाप्त करना है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें हमारे दिमाग को पसंद नहीं है, कौन से वो ट्रिगर्स हैं। ओके, तो वो ट्रिगर्स आइडेंटिफाई होंगे, आप अपने आप को उन ट्रिगर से दूर रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, खाना समय पे खाएं, घर का खाना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। तीसरी चीज, रेगुलर 30 मिनट्स तक एक्सरसाइज करें। सोने का एक अपना नियम बनाएं कि मुझे 11 बजे या 10:30 बजे जो मेरा सोने का टाइम है, मैं उस समय पे सोऊं, सुबह सही समय पे उठूं। तो अगर हम ये चीजें कर पाते हैं, तो हम माइग्रेन के होने की संभावना को काफी हद तक कम कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है, तो आप स्पेशलिस्ट से जब मिलेंगे, तो वो आपको एबॉर्टिव मेडिसिन जो कि दर्द को खत्म करे, या फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन जो दर्द के होने की संभावना को कम करे, इसके बारे में आपके प्रोफाइल को देख के जज करेंगे कि कौन सी मेडिसिन आपके लिए अच्छी रहेगी, और वो आपके दर्द की दवाइयों के लेने की संभावना काफी हद तक खत्म कर सकती है। तो यूजुअली हम जो प्रिवेंटिव मेडिसिन होते हैं वो 6 महीने 9 महीने तक देते हैं, और उतने समय में मरीज को बोलते हैं कि आप अपनी मेडिटेशन, एक्सरसाइज, दिनचर्या को ठीक करना, खाने के टाइप को और खाने के समय को संतुलित करना, उससे आप माइग्रेन के होने की संभावना को काफी हद तक कम कर। डॉक्टर साहब, कई बार शरीर के एक साथ शरीर के कई हिस्से में दर्द होता है, क्या ये इंटरकनेक्टेड होता है? यस, ये बहुत बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको 2 टाइप के पेशेंट्स मैं बहुत रेगुलरली पेन क्लिनिक पे देखता हूँ। एक होता है जिसके अंदर आपके शरीर के बहुत सारे हिस्सों में दर्द हो, गर्दन में दर्द है, अपर बैक में दर्द है, लोअर बैक में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, और इसके अंदर आपके सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल आते हैं। ठीक है, थायराइड, विटामिन डी, यूजुअली फीमेल्स होती हैं। ठीक है, इनमें ज्यादातर फीमेल्स होती हैं, और ये दर्द को हम बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सेंट्रल पेन। ठीक है, एंड इसके अंदर मसल्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। दूसरा होता है कि सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक पेन डिसऑर्डर। तो सोमैटिक पेन डिसऑर्डर एक तरीके की मानसिक परेशानी है, जिसके अंदर मरीज को ये लगता रहता है कि शरीर के कुछ हिस्सों में उसको दर्द हमेशा ही रहता है। जैसे कि मरीज को कभी तो शोल्डर में दर्द हो जाएगा, वो ठीक हो गया तो फिर आप कूल्हे में शुरू हो जाएगा, फिर उसको सर में दर्द शुरू हो जाएगा, किसी को पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, साथ में डिप्रेशन रहना, साथ में आपको नींद ठीक से नहीं आना। तो ये सोमैटिक पेन सिम्टम डिसऑर्डर भी एक तरीके की प्रॉब्लम है, जिसमें शरीर के डिफरेंट अंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी सारी जांचें नॉर्मल आएंगी। तीसरी एक कैटेगरी रहती है जिसके अंदर शरीर के बहुत सारे जगह पे दर्द है, जैसे कि अमूमन जोड़ों का दर्द, कि आपके छोटे जोड़ में दर्द है, उंगलियों के जोड़ों में दर्द है, रिस्ट में दर्द है, कंधों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हील में पेन है, और साथ में आपको सुबह उठ के जकड़न रहती है, आपको थकावट रहती है। तो ये अमूमन गठिया जैसी बीमारियों में होता है। तो ये सब चीजें यूजुअली अगर आपके शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में दर्द है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इंटरकनेक्टेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उस प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंच के आइडेंटिफाई करके इन बीमारियों को हम जड़ से ही खत्म कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। अगले राउंड में फिर हम लौटेंगे आपके पास कुछ और सवालों के साथ।
डॉक्टर आमोद मनोचा, हमारे यहाँ देखा जाता है कि ज्यादातर लोग कई बार ये शिकायत करते हैं कि सुबह सोकर उठते हैं तो सिर में दर्द रहता है, हालांकि घंटे 2 घंटे बाद वो ठीक हो जाता है। तो ये जो सिर दर्द रहता है, अगर बार बार होता है सुबह सोकर उठने के बाद, तो ये क्या किसी बीमारी का लक्षण है या ये स्लीप डिसऑर्डर है की वजह से हो रहा है? किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए, और आपके सारे ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और वेलकम उन सब लोगों को जो सुन रहे हैं। तो आपका सवाल है कि सरदर्द सुबह उठ करके थोड़े समय रहने का वाला सरदर्द वो क्या है? और पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूरी बात ये है कि हम ये जाने कि वो किस एज ग्रुप के पेशेंट में हो रहा है, उसका सिग्निफिकेंस होता है, और उससे और कहीं पे और शरीर के किसी और अंग में दर्द है या नहीं, उन चीजों का भी सिग्निफिकेंस होता है। हमें पहली चीज तो ये जाननी होगी कि पेन का जब भी हम इलाज करते हैं तो हम एक चीज को लेकर के निर्णय नहीं ले पाते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है या क्या हो सकता है। पेन का डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो हमें 100% ये बताता है कि दर्द यहाँ से आ रहा है। मान लीजिए कि हम किसी का MRI भी कराते हैं, तो MRI हमें ये बता सकता है कि नॉर्मल में ऐसा दिखता है, यहाँ से कोई और चीज है जो एबनॉर्मल है, जो ट्यूमर हो सकता है या ये हो सकता है या वो हो सकता है, लेकिन क्या वो चीज दर्द कर रही है ये हम नहीं कह सकते। तो हमारे पास डिस्पाइट जो भी एडवांसमेंट हुई है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें ये 100% बता पाए कि यहाँ से दर्द आ रहा है। तो हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? इंसान की हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसके टेस्ट कराते हैं, और ये 3 विभिन्न भाग हैं डायग्नोसिस की तरफ जाने के। फिर उन सबको जोड़ते हैं और एक इंटेलिजेंट गेस लेते हैं कि ये दर्द किस कारण से हो सकता है, और फिर हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं। तो अब जो आपने एक सिचुएशन बताई कि किसी को सुबह सुबह उठ करके दर्द हुआ है सर में थोड़े समय के लिए, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये दर्द जोड़ों से भी उठ सकता है, जैसे गर्दन के जोड़ों में किसी तरह का आर्थराइटिस हो और सुबह सुबह उठने में ये परेशानी दे, और वो गर्दन का दर्द सर की तरफ भी जाता है, जिसे हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं। उसके अलावा आपका स्लीप पैटर्न क्या है, आप सो कैसे रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, ये सब चीजें कैसे सो रहे हैं, आपकी स्लीप की क्वालिटी क्या है, इन सब चीजों को हम स्लीप हाइजीन कहते हैं। तो नींद का एक बहुत बड़ा इसमें रोल हो सकता है। और बहुत सारी सिंपल चीजें होती है, जैसे मेरे सोने का पोस्चर क्या है, कि मैं 1 तकिया ले रहा हूँ, 2 तकिया ले रहा हूँ, बिल्कुल तकिया नहीं ले रहा हूँ, और ये हर इंसान के लिए अलग रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई तकिया नहीं है और मैं पीठ पे सो रहा हूँ और मेरी गर्दन ऐसे लटकी हुई है, तो संभवतः सोते समय बहुत सारी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, और वो भी सुबह उठने पे दर्द की तरह मैनिफेस्ट कर सकता है। तो ये जो सुबह आने वाला दर्द है, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, कैसे सो रहे हैं, आर्थराइटिस, बहुत सारी ऐसी परेशानियों को मतलब सिग्निफाई कर सकता है। और इसके मूल कारण पे जाने के लिए हमें स्टेप वाइज अप्रोच लेनी पड़ती है, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, और एक इंसान को नजर में रखते हुए उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट पे इसके बाद में बात करते हैं। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ सीरियस भी हो सकते हैं, कुछ नॉन सीरियस भी हो सकते हैं। इसीलिए जो एक स्पेशलिस्ट है जो ये चीजें रोज देखता है, उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत काम आता है। इसीलिए हमारे पास गूगल में चाहे बहुत सारे सुझाव होंगे जो लोग पढ़ते हैं और सोचते हैं अच्छा कैंसर तो नहीं है, अच्छा और कोई परेशानी तो नहीं है, तो लेकिन उससे डरने की बात नहीं है। और जरूरी है कि एक इंसान जो इसके बारे में जानकारी रखता हो, सिंपल सी चीज है, आप अपनी आंखों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी सरदर्द पे प्रभाव पड़ता है। क्या आपकी आंखों में कोई कमजोरी है, बहुत सारे कारण है। ठीक है, और खास करके जो सुबह उठ के होने वाला दर्द है, उसमें आर्थराइटिस जैसी कंडीशन जो गर्दन में भी हो सकती है, उनका रोल हो सकता है, या आपके स्लीप पैटर्न का या स्लीप पॉस्चर का, ये सारी चीजें ध्यान देना इन पे जरूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या विटामिन और या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट पेन रिलीफ में मदद करता है? ओके, मुझे इस बात पे बहुत कंट्रोवर्सी है कि कौन से विटामिन जरूरी है, किस हद तक जरूरी है। और हिंदुस्तानी कल्चर में
नेचर की तरफ झुकाव ज्यादा है। एंशिएंट टाइम से हम कैसे अपने खान पीन से चीजों को बदल सकते हैं, इस बात से बहुत झुकाव है। और अगर हम इसको लॉजिकली सोचें तो हर विटामिन की एक रेंज दी हुई है, और वो रेंज क्यों दी हुई है, एक कम रेंज और एक ज्यादा रेंज, इसके बीच में आपको रहना है। क्यों? क्योंकि ज्यादा होगा तो भी परेशानी होगी और कम होगा तो भी परेशानी होगी। तो उसको उस रेंज में रखने का सिग्निफिकेंस है। और बहुत सारे विटामिन, खास करके विटामिन डी या B12, इनका रोल है दर्द के अंदर। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए किसी को नसों का दर्द है, उसकी नसों पे चोट है, और अगर मेरा विटामिन लेवल नॉर्मल है और मैं ये अगर ये सोचने लगूं कि मैं वो विटामिन की गोलियां खाता रहूंगा और उससे मेरा दर्द कम हो जाएगा, तो ये गलत धारणा है। तो उनका रोल है, अगर वो कम है उनको नॉर्मल लेवल में लाना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे मरीज मैं ऐसे देखता हूँ कि खाए जा रहे हैं विटामिन, और जब उनका टेस्ट कराया जाता है तो जो नॉर्मल लिमिट है उससे 4-4, 5-5 गुना ज्यादा आता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और विटामिन डी जैसा जो एक जो विटामिन जो है, इसका एक अहम रोल रहता है, क्योंकि ये सेल बॉडी की ग्रोथ और बहुत सारे नॉर्मल फंक्शंस के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। और इस पे बहुत नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी कोविड पे भी इसके ऊपर अंदर इस विटामिन के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई। लेकिन अगर ये नॉर्मल रेंज में है तो उसके आगे इसका कोई रोल नहीं है, और उसको खाने से आपको कोई दर्द जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो नॉर्मल रेंज से नीचे है तो हाँ, वो आपके दर्द को मैग्नीफाई कर सकता है, इसलिए उसको नॉर्मल रेंज में लाने में फायदा हो। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को संक्षेप में बताइए कि क्या एक ही दर्द बार बार हो तो ये किसी सीरियस बीमारी का लक्षण है? किशोर जी, मैंने आपका क्लू ले लिया, संक्षेप नहीं बताऊंगा। देखिए, कोई भी चीज बार बार हो रही है तो इसलिए कि हमारे आपके पास दोबारा आना है। कोई बात नहीं। किसी भी चीज का बार बार होने का मतलब है कि शरीर उस चीज को फिक्स नहीं कर पा, या कोई एक परेशानी है जो अपने आप ठीक नहीं होने वाली है। इसीलिए क्रॉनिक पेन का जो डेफिनेशन रहता है वो 3 महीने या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर शरीर एक चीज को 3 महीने या 6 महीने में फिक्स नहीं कर पा रहा है और वो बार बार तंग कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई कारण है जिसे हमें जांच करके उसका सुधार करना जरूरी है। तो हाँ, वो एक सिग्निफिकेंट बात है। थैंक यू सर, हम आपके पास फिर लौटेंगे। मेरा अगला सवाल डॉक्टर पूजा पांडे से है। पूजा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। पूजा जी, मेरा सवाल पहला ये है कि ये बायो इलेक्ट्रिक थेरेपी क्या है और ये पेन मैनेजमेंट में किस तरह मदद करती है? हाँ, सो फिजियोथेरेपी में ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बहुत सारे यूज करते हैं आजकल। सिर्फ बायो इलेक्ट्रिक थेरेपी ही नहीं, आजकल मतलब शॉक वेव से लेकर लेजर से लेकर आगे हम बहुत बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा पेन कम हो सकता है। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पेन थोड़े दिनों के लिए कम हो सकता है, ये आपकी लाइफ टाइम रिक्वायरमेंट नहीं। आपका पेन इसलिए कम किया जाता है जिससे कि आप एक्सरसाइज करें, मसल स्ट्रेंथन करें, लाइफस्टाइल सुधारें और फिर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सके। मतलब क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि वो बोलेंगे कि मैम आप हर रोज ये कर दीजिए, और मैं बोलूंगी कि आप एक्सरसाइज कीजिए, वो करके जाते हैं, फिर 2 महीने बाद वापस आ जाते हैं। उनको लगता है पैसे हैं तो स्पेंड कर दें। तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से लेकर, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन तो नहीं, बट हाँ IFT हो गया, टेंस हो गया, रशियन करंट हो गया, बहुत सारी ऐसे करंट्स हैं जो आपका टेम्पररी रिलीफ देती हैं। कि एक पेन किलर आपको टेम्पररी रिलीफ देता है, वो आपका उपाय नहीं है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट्स है, ये आपको टेम्पररी रिलीफ देते हैं, ये उपाय नहीं है। पूजा जी, एक सवाल मेरा और है कि ये जो एक्यूपंक्चर है, हाँ, या पेन थेरेपी है, पेन थेरेपी में एक्यूपंक्चर यूज करते हैं या दूसरे नॉन मेडिकल थेरेपी यूज करते हैं, वो कितने फायदेमंद है पेन रिलीफ में बनिस्बत मेडिकेशन के? हाँ, तो जैसे कि मैं एक्यूपंक्चर तो नहीं फॉलो करती हूँ, पर मैं ड्राई नीडलिंग करती हूँ। तो ड्राई नीडलिंग ट्रिगर पॉइंट्स मतलब आप एक जगह पे दर्द है, मतलब बहुत सारी जगह पे दर्द है, पर ये पॉइंट इतना ज्यादा दर्दनाक है कि छूते ही चीख निकल जाए। तो उन ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीव करने के लिए
ये बहुत अच्छा है, देयर इज नो साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट आपको जानना है, यही मैं बार बार कहती हूँ। जैसे कि मैं कियास्टियम प्रैक्टिशनर भी हूँ। कियास्टियम इज अ मायोफेशियल रिलीज टेक्नोलॉजी, वो कंप्लीटली मैनुअल है। मान लीजिए मैं मोबिलाइजेशन करती हूँ या मैनिपुलेशन करती हूँ, या तो वो आपको टेम्पररी रिलीफ दे रहा है, और उसके बाद मतलब काफी ऑफ कोर्स मायोफेशियल रिलीज से आपको काफी फायदा भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं है। खुद मैं, चाहे मुझे दर्द हो या ना हो, मैं कियास्टियम करवा लेती हूँ, क्योंकि हम लोग इतने देर तक खड़े रहते हैं, इतने पेशेंट्स को उठाते हैं बैठाते हैं, तो कभी कहीं दर्द ना हो जाए, मैं खुद ही फोम रोलर टेक्निक यूज करती हूँ, या फिर कियास्टियम करती हूँ, या फिर ड्राई नीडलिंग करवा लेती हूँ अगर कहीं पे दर्द होता है, पर वो तुरंत कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा ही उसी पे डिपेंड हूँ। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सुधार नहीं रहे हैं, आप अपना एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, देयर आर पेशेंट्स ऑफ माइंड, वो बोलते हैं कि हमें दर्द क्यों आया, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि दर्द क्यों नहीं पहले आया, ये क्वेश्चन पूछ क्योंकि कुछ ठीक कर नहीं रहे हैं। एज सिंपल एज डॉक्टर अमोद हैज सेड दैट पीपल आर नॉट स्लीपिंग, पीपल आर नॉट स्लीपिंग। आपको अगर काफ पेन है और मैं किसी बंदे को बोलती हूँ कि आपने आज कितना पानी पिया, तो देन दे आस्क मी कि अरे आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, आपको क्या करना है मैं कितना पानी पीऊं? काफ पेन, पानी नहीं पिएंगे तो काफ पेन तो आएगा ही आएगा ना। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजों से ठीक हो सकती हैं, तो इंसान को खुद बदलने की चेष्टा करनी चाहिए। When we talk about Ayurveda and stuff like that, the first thing in Ayurveda is to eat early and sleep early and all that, है ना? आप दवाइयां खा के इंतजार ना करिए, आप थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करिए। थैंक यू डॉक्टर पूजा। अगले राउंड के क्वेश्चन आंसर के लिए ओवर टू मिस्टर शंकर। Thank you, Kishore. I will start with Dr. Mithilesh Kumar. Sir, good morning. Good morning, and nice having you on our show. Sir. Earlier, palliative care was primarily restricted to people with cancer. Now, those with HIV, AIDS, neurodegenerative disorders, progressive neuromuscular diseases, metabolic disorders, terminal organ failure, cardiac, respiratory conditions, liver conditions, and even kids, have this particular treatment. Yet palliative care is not recognized as it should be, and access to it is restricted. What's your view on this? Very good question, sir. And you have almost summarized everything what non-cancer part is covered in palliative. But if you don't mind, can I take 1 or 2 minutes, some questions asked by Kishore ji? I just want to add a few points, if you permit. Yeah, sure. Please go ahead. Okay, first is we have discussed about fibromyalgia. In our scenario in India, if somebody is complaining of pain which starts from the toe and goes up to tip, most of the time we just say that he or she is just complaining of pain. There cannot be a pain, but it is a real pain. That person is suffering. Okay, it is a real entity. We have a diagnostic criteria for that. That patient is having pain from toe to tip. Not only pain, that patient is not able to sleep. 100% of that patient are not sleeping for years and years. They are having myofascial pain, they are having back pain, they have depression. And it is the time I'm having so many patients of fibromyalgia. The approach is totally different. We are not just doing intervention. We are not just giving medicine. We understand we are the only person who listen to their pain, try to solve it slowly. They are suffering like anything. Second, one question he has asked, that if pain is recurring frequently, pain is a sign our body is giving that something wrong with that body part. We have to respect that. If there is pain, we have to search for the pain generator. We just can't suppress the pain and move on. It is a sign our body is giving, and that is very important. Another one is exercise. We are saying every patient, whether it is a knee pain, we don't know that if my body weight is 100 kg and I'm asked to move on the stairs. While moving up a stair, our knee joint will get us 7 times of our body weight. So my knee joint will have to face 700 kg to go upstairs.
If I'm going downstairs, it is almost 350 kg. So my joint will bear that much pain? That we have to ask. Just asking patient to do exercise without giving proper pain relief, without giving proper medication is also not good. We have to see, we have to be on their shoes to understand whether this patient is able to do exercise or not. Now coming to your question, palliative care, it's a wonderful branch, and I'm an anesthesiologist, but from last 8 to 10 years, due to some mentors like Dr. Cynthia, Dr. Shishma Bhatnagar, our Dr. Jashishu, we are into it, because cancer pain, you told that cancer patient, medical oncologist, surgical oncologist, they are managing. It is started for cancer patient, but now it has increased. As you told that a chronic kidney disease patient, chronic COPD patient, pediatric patient, kids with non-reversible, non-treatable causes. So palliative care is like, we never say to anybody that I cannot do anything for you. A doctor, a surgeon can say that this is not operable. So now we can't do anything, but we cannot say. There are two ways to treat anything. One is you cure that disease. Once we know that it is irreversible, we cannot cure, then all the signs and symptoms produced by that disease, we will treat all of them. If you have nausea, we have treatment for that. If you have pain, we have treatment for that. You have constipation, we have treatment for that. You are not sleeping, we have treatment for that. We do family counseling, all disease-specific management for all this patient. The way we give respect to a newcomer, a newborn, the same respect we have to give to the terminal and stage patients also. So now you deal with a lot of young generation people also who have knee pain, back pain, headache and all. Sure. What is your opinion on this ooh, ouch type of balms that's coming? Of course, earlier we had dealt with drugs to control pain, but what about these balms? Are they effective? To some extent, there are two types of balm. One is our known research-based medicine, like we have drugs, non-steroidal diclofenac, we have ketamine, we have buprenorphine, we have gabagesic. So all these drugs which we use, either they are getting absorbed through skin, or they are counter irritant. That is one of the mechanism of treating the pain. So they are effective, we are using. There are other medicine also which are advertised on television, which people are using, they are getting relief, but we can't comment because we are not taught about them, and we don't have any research or reference or evidence to say that whether they are helpful or not. So we don't advise those medicine. But yes, we have lotion, we have cream, which are very useful. They are lignocaine, local anesthesia in superficial pain condition. It is very helpful. We have. Well explained, Dr. Kumar. We'll come back to you, of course. Thank My you so next much. question is to talk to Dr. Anurag Agarwal. Dr. Agarwal, how does one maintain spinal health, especially when it comes to the IT crowd? Yeah, this is I am taking regular sessions for the IT people. Okay, they are the one who are having the most sedentary lifestyle, which is the most common cause of spine pain and neck pain. Okay, one is the sedentary lifestyle. Second is wrong posture, because they have less knowledge about the ergonomics, how to sit, how long to sit, and how to stretch your body when you have to do a job in prolonged sitting position. Third thing is lack of sunlight. Okay, because they are having very less access, and they are in a closed space. So these are the three reasons why IT population is suffering from neck pain and spine pain. So first thing is they should stop using the mobiles as less they can use, because if we are flexing the neck, okay, too much to view and texting, so we are putting excessive strain on the neck. So normal neck is around 4 to 5 kgs, and if we are flexing the neck 15 degree, 20 degree, 30 degree like this, then we are putting excessive strain on the trapezius and the rhomboids muscle, which initially leads to muscular pains. But because of this excessive pressure, the disc bulges start
And similarly, the disc per se, which is the most common cause of spine pain, in those cases, because of sedentary lifestyle, the blood circulation of the disc is hampered. When you are jogging, when you are brisk walking, cycling, there is compression and expansion of the disc, which is a sponge-like thing. So the blood is sucked in and the disc remains healthy. When you are just sitting, not exercising, the disc has developed cracks in it. And when there is some jerky movement and you lift weight, suddenly that crack expands in size and the disc bulge occurs. So it is very important to take care of the spine by good posture, regular exercise. These are the two most things. And third is taking supplements, especially vitamin D, because apart from sunlight and the capsules, we have very less access to this vitamin D in our normal life. How does what exactly is ice pick headache and how do you treat it? Ice pick headache. Can you? I am not aware of this term, ice pick. Okay, this is actually a throbbing pain that comes on to the neck, and usually it is called an ice pick because it's really very throbbing. Okay, so when we are talking about throbbing headaches, the first thing which I already mentioned is first we have to diagnose it is a primary or a secondary headache based on the symptoms and certain investigations like NCCT head. We will be able to identify. We have able to identify now it is a primary headache. So most common causes of throbbing headaches is migraine, but sometimes it is a mixed headache also, tension headache plus migraine. So if the frequency of headache is too much, and we have taught the patient about the lifestyle changes which are needed to decrease the frequency, still the patient is persisting with headaches, we have certain neuropathic pain medications. We have exactly 4 or 5 types, and depending on the patient profile, we can choose which medicine suits him or her best. Like we have topiramate, propranolol, we have Cybelium, and we have tricyclic antidepressants. So these medications work on the nerves, and by stimulating certain receptors and increasing the chemicals in the brain, they reduce the frequency of headache. And once the frequency is reduced, once in a while, if the headache occurs, they can take a abortive pain medicine. So yeah, you spoke quite well about this neck pain. I think in future we might really see something called as a WhatsApp headache and Instagram headache, where people use excessive, have approach to WhatsApp and Instagram where the neck gets affected. Already it is being reflected. Already it is being labeled as a text neck syndrome. Okay. Yeah. So we might have a yeah, correct. Thank you. I'll move on to Dr. Amod Manocha now. Dr. Amod, what exactly is idiopathic pain? Although its origin is often a mystery, idiopathic pain is very real. How do you deal with these patients? Hi, Mr. Shankar. Thank you for that question. So idiopathic means where you can't pinpoint a cause very properly, or you can't identify where the pain is coming from. And as I said before, when we were discussing questions with Mr. Malviya, that, it's very, I predominantly get patients who've not had relief from other places, who've seen 10 doctors, and often the first statement they'll come and say to me is that I've seen the 10 different doctors and nobody's been able to help me. So that just tells me the magnitude of the problem, how difficult it is to identify where the pain is originating from. And not only that, whether it's real, whether we can measure it or not, there is no meter. The patient labels it. And one of the first things we talked in the medical school is that pain is what the patient says it is. But often the mind tricks you. Actually, is there a cause or not? I can give you numerous examples from my personal cases where the mind tricked them into it, and they believed that there was, it was the mind and not just actual physical cause. So idiopathic problems are very common. But having said that, we should leave no stone unturned to find out the cause, because often with experience, I've learned, okay, when you can't solve a problem, it stays in your head, and maybe 5 years later, as the technology advances and you read new things and you remember a patient suddenly, oh, that was the problem that guy had, and maybe he had this. That's the limitation we have with our medical knowledge, technology, and that's where we are. So we have to make all efforts. Let's talk about back pain.
the incidence is 70 to 80%. 7 to 8 out of 10 people would have back pain at one point in their life or some point in their life, right? And you'd be surprised to know that there is a diagnosis called non-specific low back pain, which means, okay, there is back pain, but I can't pinpoint on one specific reason for this back pain, right? And the incidence of that non-specific back pain is something like 60, 70% or more than that. So despite the problem being so common, we still can't pinpoint one thing it is. That just signifies the complexity of pain and the complexity of the problem which people face. So yes, it is a common problem, but that shouldn't make people disheartened, and we should be looking for reasons, and often we get down to the reasons or at least provide symptomatic relief. You deal with pain management and also anesthesia. You have a lot of experience in the UK. Now, is epidural anesthesia given only for labor pain or for other types of pain also? Okay, so ever since I moved back to India, I've just been doing chronic pain and I've not been practicing anesthesia, but that's besides the point. So anesthesia, epidural injections. So what is an epidural injection to start with? It's an injection given. So the spine, the main function of the spine, it protects the nerves which are traveling from the brain and going into different parts of the body. And around these nerves is a space between the bone and these nerves, which is called the epidural space, to simplify it. So by an epidural injection, we give an injection into the place between the nerves which are traveling and the bone and the space which is there, which is called as the epidural space. Now, this injection is more popular because of labor pains, because it's very commonly used, and labor pains is known to be one of the most painful conditions one can experience. I don't have any experience with it. That's a different issue, but yes. So that's one reason why it became popular. But in chronic pain, it's used very frequently. Like neck pain going into arms, we do cervical epidural. Cervical means neck, and epidural means the epidural injection. So we do injections in the neck. Then in the lower back, we do again injections, because remember, all these nerves which are carrying the pain signals from whichever part of the body, they're actually coming out from the spine, right? Most of them, leaving a few up over the face area. They are all coming out from the spine. So that's a very important place where you can modulate the pain signals which are going to the brain, because it's in the brain we perceive the pain. And that's a very important resource for a pain specialist. Even in cancer patients, we put in special devices in there where we can modulate the pain. We can put in special kind of stimulators. We can put special kind of pumps, deliver medication there. It's a very useful stuff. Thank you. We'll come back to it, of course. Now I move on to Dr. Puja Pandey. Thank you. Dr. Puja, nice to have you. I think you look totally different from what you are doing the exercise and everything. So yeah, because I have to tie my hair, no. So I thought for a change, let me look beautiful. Yes, and no demo this time. Yes, I will start with an offbeat question to you. Now, does spirituality in any way help in managing or alleviating pain? Because sometimes what happens. What did you mention? Sorry, I did not get it. Does spirituality have any role in controlling or alleviating pain? Because what happens is when people at the fag end, when they don't have any remedies, they opt for such remedies. Does it have any this one? Absolutely, absolutely. I say that because I am also a yoga instructor, right? Yes. I understand that lot of pain comes from your mind. Okay, ask a young couple who has just had a breakup; they will have lot of pains in their body also. So, lot of stress in your mind actually cause lot of pain in your body. Okay, and anything which release that stress will also helps in decreasing the pain. So whether it's spirituality or you can call it yoga, when you actually practice it, there is a lot of internal pain, which I say that the pain which is from the mind or from the stress. If you lose loved ones, there is so much of, sadness inside, which can cause you neck pains, which can cause you headache, which can cause you back pains. Okay. So yes, any pains which is related with mental stress, yes, spirituality can help. Okay, a lot. Also, in physical pain, for example, if I have a pain because of a disc prolapse, okay,
and I am a person who is spiritual, and I have a person who is not spiritual. There will be that not spiritual patient who will come every day and complain, I am not getting out of this pain. It's been this month. So the other person will say, yes, still pain is there, ma'am, but it is getting better, but it is getting better. That makes a lot of difference for a physio to work on the pain. Okay, so yes, if I have pain in my mind 24/7, it is not going to go away. What's your opinion on pranic healing? That's also used sometimes to. Of course, I don't practice it. I don't practice it, but I have heard people getting better from it. So I can only say that I've heard. I personally don't have any experience of it at all. Dr. Puja, one more question to you is, can pain sometimes be an escape mechanism? For example, when kids don't get proper attention and there's a second child coming into the family and they don't get it, normally you see the elder one saying that I got a pain here or some sort of complication. Similarly, grandmothers, when their grandkids go away, there is some type of loneliness and they'll always first complain that they have a pain in the knee or pain somewhere. So is this a sort of escape mechanism, that pain you have? Is it a feigning pain or is it a real pain? Yes, pain can be one of the escape mechanisms. I'm not saying that it is not associated physically, but yes, it accentuates when it is combined with mentally. Okay, so yes, you can have a mother-in-law who can be a arthritis patient, but she may not be able to get up and walk because she wants some attention. Okay, so I'm saying that yes, physical problems can be there, but it accentuates when you crave for attention. And it's happening a lot post-pregnancy. I see a lot of women post-pregnancy, and everybody will be like, how is the child developing? What are the milestones of the child? Like as simple as nobody asked if the women still have diastasis recti. This is something which is not discussed at all by gynecologists, obstetrics, all over India, you know. So women wants to get, and people tell her that it's okay, you've just given birth. What is important now? Take care of your baby. Who will take care of themselves? So then they come with lot of pains in the upper back, middle back, lower back, which is basically craving for some attention. They need some rest. They need some love. So yes, I agree that there can be a physical problem. It accentuates when you combine it mentally. That's well put. I think that's extremely well put. I think we're running short of time, but I'll have one round of question common to all of you. I think Dr. Navneeta had raised this point. What's your, just in one line, if you can give me an answer, starting with Dr. Kumar, what's your opinion on medical marijuana? It's legalized in the US. We are working on it. We don't have much experience in this. We are working on it. Your opinion, Dr. Agarwal? Please unmute yourself. Regarding medical marijuana. You mean to say about the opioids? Yes. Which is legalized in the US and of course not here. That the people who have less knowledge about the medications, okay, they are using too many of the opioids. But when it comes to the pain specialty, we target the different receptors. So we don't only give the patient opioids. We have neuropathic pain medications, opioids, NSAIDs, and some other non-NSAID, non-opioid drugs like Nefopam also has come up. Okay, so we are not only dependent on opioids. The second thing is that if the patient's pain is not getting relieved with medications, psychiatric help, or with exercises, physio, we have interventions with us. So we have a larger armamentarium. So we don't need to step up and just keep on giving opioids to suppress the pain. So I think this problem is more common when the patients visit to physicians who have less knowledge about the armamentarium and the interventions which pain specialists have. Dr. Amod? Hi, sorry. Since you haven't given me the time warning, I'll take the liberty. This happens to be a special interest area for me. Anyways, so medical marijuana has got very few licensed indications.
and the evidence behind its use is sketchy. It's even in the 4 conditions it's licensed, it has got very sketchy evidence to support its use. But often, the people I get who come and ask for it, they have a typical profile. They haven't tried any of the basic things. They have a relative living in the Western world who's influenced their decision, and they have no knowledge of it but want to try it because it's a new kid in town and everyone wants a new kid in the town or the magic pill. I see that as a deficiency we have left in the system because we have not been able to give them the adequate relief we should be giving them. So, but there are some situations where you have very little to lose and actually the benefits might outweigh, like in a dying patient, because it can have multiple impacts: pain relief, appetite, well-being. So it has to be a very cautiously calculated step, whether you prescribe it or not, taking into account the individual factors. The other last thing, the Indian preparations have different content to the ones which have been given in the Western world. So please read the label on what you're using before you decide to use it or not. Dr. Puja. Who am I to say anything about it? Okay, I'm a physio. I don't even consider, I don't even tell painkillers. I am somebody, if my patient tell, can you give one painkiller? Go down, there is an orthopedic surgeon. Go and not me. So I'm not somebody, and I will not put in my mouth even a painkiller. So I am somebody who can't answer this But question. your yoga itself creates a lot of atmosphere for the mind. I think that itself is a solution. So Yeah, see, I have not. See, my child was born. I think I have given you this. My child was born through surgery, and I have not taken a single painkiller. 11th day, I was working. Okay, 11th day post delivery, I was working without painkillers. So I don't. I think somebody in the panel mentioned that they have not undergone labor pain. I think you are the one who can. I have 42 hours of labor pain also. yes. So it was wonderful having you all in this particular session. I think it was quite lively There's one discussion. thing I want to mention, Shankar. Yeah. Dr. Mithilesh has said that a patient with 100 kg and not able to exercise, yes, they should not go to a fitness instructor, but they should definitely visit a physiotherapist, because if nothing, they will start with isometric exercises, ankle pump exercises, just sitting and moving the legs. That itself makes a foundation for making it even, ahead. My point was the same. You make the patient comfortable doing this exercise. Yes, that's right. Pain is inevitable. Everybody in some part of their life, some time of life, whether young or old, will have pain. But to manage it in a teamwork, in a multidisciplinary is must. Pain is inevitable. Suffering is optional. So whether you choose to suffer or treat, that is important. I always say pain is always your best friend. It tells you a lot of things about your body, and it will always teach you lesson, whether mental pain or physical pain, it will always teach you something good. Thank you so much, Mr. Shankar. Thank you so much. Thank you. And pain, I think, is a very common thing, that you have a pain in the neck, you have pain in the head. When you lose somebody you love, you have pain in the heart. True. You have pain almost every. I think all of us can take care of physical pain, heart pain, or breakup. Yes, correct. Thank you very much. Wonderful having you all in this session. I think we'll deal more with pain later on. I think excellent having you. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. We now move on to quiz number 2. Well, quiz number 2 is again on pain. Which of the following statements with respect to chronic pain are incorrect? Pain is a natural side effect of aging. B, stress plays a major role in increasing or decreasing the intensity of perceived pain. C, besides analgesic, lifestyle changes can also elevate symptoms of pain. D, lack of sleep can worsen conditions of chronic pain. Well, I'll now go on to the answers of quiz number 1 and quiz number 2. The answers are, well, the question of quiz number 1 was, which of the following chronic pain conditions can yoga help with? And the correct answer is all the above. That is, it can help cure arthritis, lower back pain, migraine. The answer to quiz number 2
which I just now asked, which of the following statements with respect to chronic pain are incorrect? Well, the answer is pain is a natural side effect of aging. Thank you very much. Thank you all for being in this particular session. I now hand it over to Kishore. थैंक यू मिस्टर शंकर। तो आज के हेल्थ फॉर ऑल में इतना ही। हमें उम्मीद है कि पेन मैनेजमेंट के मामले में आपके बहुत सारे भ्रम आज दूर हुए होंगे। हम आज के शो में शामिल सभी डॉक्टरों और विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय देकर दर्शकों को जागरूक करने की कोशिश की। हम काफी संख्या में जुड़े दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा से आपको बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला होगा। अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे YouTube और Facebook पर, जिसमें चर्चा करेंगे वर्क प्लेस वेलनेस पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, टेक केयर।